رحیم الحسینی حاضرمان یا مولا مہربان you have blessed us with this Mubarak day. Ya Maula Mehriban, Ya Mushkil Kusha, let us praise you, Maula. Let us praise you. And to praise him, I have this beautiful kalam of Allama Sahib, Yare Badiul Jamal. जाने जहान कौन है यारे बदीउल जमाल, दिल में निहान कौन है यारे बदीउल जमाल, जलवा नुमा है इधर, जलवा नुमा है इधर, हैरत अहले नजर गैरत शम्सो कमर यारे बदीउल जमाल, यारे बदीउल जमाल। चेहरा मुझे याद है, पूरो परीजाद है, शाद है आबाद है यारे बदीउल जमाल, यारे बदीउल जमाल। पै करे हुस्नो जमाल, पै करे हुस्नो जमाल, बाहिमा वस्फे कमाल, दहर में है बेमिसाल यारे बदीउल जमाल, यारे बदीउल जमाल। जाने बाहर जाने मन, जाने बाहर जाने मन, रौनक बागो चमन, गुंचा दहन गुल बदन यारे बदीउल जमाल, यारे बदीउल जमाल। जलवा दिखा जा जरा, जलवा दिखा जा जरा, दिल में समा जा जरा, रूह में आ जा जरा यारे बदीउल जमाल, यारे बदीउल जमाल। सब में उसी का मकान, सब है उसी के निशान, सबकी वही जान जान यारे बदीउल जमाल, यारे बदीउल जमाल। नूर सहर तुझसे है, नूर सहर तुझसे है, इल्म हुनर तुझसे है, लाल गौहर तुझसे है यारे बदीउल जमाल, यारे बदीउल जमाल। इश्क फना की कसम, इश्क फना की कसम, वस्ल अता कर सनम, कल को रहेंगे न हम यारे बदीउल जमाल, यारे बदीउल जमाल। इश्क फना की कसम, इश्क फना की कसम, वस्ल अता कर सनम, कल को रहेंगे न हम यारे बदीउल जमाल, यारे बदीउल जमाल। इश्क में एक साज है, इश्क में एक साज है, जिसमें तेरा राज है, इस पे मुझे नाज है यारे बदीउल जमाल, यारे बदीउल जमाल। इश्क में एक साज है, इश्क में एक साज है, जिसमें तेरा राज है, उस पे मुझे नाज है यारे बदीउल जमाल, यारे बदीउल जमाल। ऐ मेरे माहे मुनीर, ऐ मेरे माहे मुनीर, याद तेरी दिल पजीर, तुझसे फिदा है नसीर यारे बदीउल जमाल, यारे बदीउल जमाल, यारे बदीउल जमाल। Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. What a beautiful way to praise our Imam. So let me read this in English too. माफ़ी, आज हम उर्दू की क्लास में हैं, लेकिन सब लोग जो है वो नहीं समझते हैं,
تو اس کی وجہ سے انگلش میں بھی ٹرانسلیشن پڑھ لیتے ہیں. یار بدی الجمال, the beloved who has ever changing manifestation, the beloved who has ever changing manifestation. What does Allama Sahib says? Who is the soul of the world? Yare Badiul Jamal. Who is hidden in the heart? Yare Badiul Jamal. اس دنیا کی روح کون ہے؟ فرماتے ہیں اس دنیا کی روح کون ہے؟ تو کہتے ہیں یار بدی الجمال. اس دل میں چھپا ہوا کون ہے؟ یار بدی الجمال. He continues to manifest here bewilderment for the people of reflection, the envy of the sun and the moon, یار بدی الجمال. کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اپنے جوم بدلتا ہے, سروپ بدلائے چھے ہمیشہ, and we saw that in our life, right? How Mola changes the joma, he manifests continuously, he's here. Bewilderment for the people of reflection, جو سوچتے ہیں, جو غور کرتے ہیں, ان کے لیے بہت ہی حیرت کا مقام ہے کہ کیسے اس دنیا میں حاضر اور موجود اور امام ہمیشہ سے ہے. سورج اور چاند جو ہے ان کو جو ہے وہ حیرت میں ڈالتے ہیں, انوی ہے ان کو. اردو میں کیا کہیں گے, اردو نئی الفاظ آ رہا ہے ذہن میں. سورج اور چاند بھی جو ہے وہ شرماتے ہیں ہمارے مولا کو دیکھ کے. چہرہ مجھے یاد ہے حور و پری زاد ہے, میرے مولا کا چہرہ ہے. تو مولا کے چہرے کا دیدار جب ہم کرتے ہیں, اس کے نور کی شعائیں جب ہم دیکھتے ہیں, تو ایسا ہی ہوا جیسے حور اور پری جنت کے لوگوں کو دیکھتے ہیں. He is happy, he is free, یار بدی الجمال. In every aspect, the embodiment of the perfect elegance and beauty. He is peerless in the world. ہمارا مولا جو ہے پے کرے حسن و جمال, بہمائے وصف کمال. اس کی کیا تعریف کریں ہم, رائٹ؟ پرفیکٹ ہے وہ اپنی بیوٹی میں. جانے بہار جانے من, رونق باغ و چمن, گنچا دہن گل بدن, یار بدی الجمال. The soul of my soul's spring, splendor of garden and orchard, bud like mouth, rose like body, yare badiul jamal. Jane bahar jane man, he is our jane man, right? And he is like splendor of garden and orchard. باغ کی جو خوبصورتی ہے, اگر یہ دنیا ایک باغیچہ ہے, اس باغیچے کی جو خوبصورتی ہے وہ امام زمان ہے. پھر کہتے ہیں manifest for a little while, dwell in the heart for a moment, enter the soul for a little while, یا بدی الجمال. Now we are pleading to مولا, right? ہم اب مولا کو گزارش کرتے ہیں کہ مولا کہ جلوہ دکھا جا ذرا, دل میں سما جا ذرا, روح میں سما جا ذرا. تو تھوڑی دیر کے لیے اپنا ظہور جو ہے وہ ہمارے دل میں ایک لمحے کو تو کر دے, ایک لمحے کو دیدار دے دے. تو مولا سے جو ہے وہ عاشقی کے ساتھ, گریہ ازاری کے ساتھ مانگتے ہیں کہ مولا تیرا دیدار دے دے نا, ایک لمحے کو دے دے, میری روح میں آ جا. پھر کہتے ہیں کہ سب میں اسی کا مکان, سب ہیں اسی کے نشان. Everyone in his abode, all are his signs. جہاں دنیا میں دیکھو, اندر دیکھو, وہی تو ہی تو, ہر جگہ اسی کی نشانی ہے, وہی ہر جگہ ہے, روح کے اندر باہر, بس وہی میرا مولا ہے. پھر کہتے ہیں نور سحر تجھ سے ہے, علم و ہنر تجھ سے ہے, لال و گوہر تجھ سے ہے, یار بدی الجمال. کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ لائٹ آف ڈان از ڈیو ٹو یو, رائٹ؟ اگر آج سحر صبح ہوتی ہے اور سورج نکلتا ہے تو مولا وہ تیری وجہ سے ہے. آج اگر ہم اس علم محفل میں بیٹھے ہیں اور علم کی باتیں کر رہے ہیں, وہ تجھی سے ہے مولا. اگر آج ہم روبیز اور پرلز, یا ہم فزیکل مثال ہیں ڈائمنڈز کی, روبیز کی, پرلز کی, یا ہم کہیں کہ اس علم کے موتی, یا علم کے جو جواہر ہم کو مل رہا ہے, یا مولا تیری ہی وجہ سے ہے. عشق و فنا کی قسم, I love this verse. I swear by love and merging, O beloved, grant me union. For tomorrow we may be no more.
right? We have to urge like that. हमें हमारे अंदर इतनी बेताबी, इतनी बेकरारी होनी चाहिए कि या मौला पता नहीं कितनी जिंदगी है, बस अब तू नवाज दे, दीदार दे दे तेरा यार बदीउल जमाल। फिर कहते हैं कि लव हैज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। आपको मालूम है कि जब दिल में आशिकी और इश्क हो तो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए, दिल में म्यूजिक बजता है। और अगर इमाम का इश्क दिल में हो तो मस्ती होगी, रक्स होगा, अजीब व गरीब। फिजिकली कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है लेकिन अंदर से इंस्ट्रूमेंट बजता है, राइट? लव हैज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट containing your secrets of which I am very proud। क्या कहते हैं कि मेरे दिल के अंदर जो म्यूजिक बज रहा है मेरे मौला के इश्क का, वही तो तेरा राज है। क्योंकि म्यूजिक अगर बाहर नहीं बज रहा है और कान से हमें सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन अंदर से बातनी कान से म्यूजिक सुनाई दे रहा है और हमारे ऊपर मस्ती तारी होती है, एक वज तारी होता है, तो ये कहाँ से आ रहा है? ये तो एक मौला का राज है। कहते हैं आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। क्यों? कि अगर दिल के अंदर इश्क होगा तो बातिन के अंदर भी सुरनाई भी बजेगी, मौसीकी भी बजेगी। फिर कहते हैं ओ मेरे, ओ माई ब्राइट मून, टू रिमेंबर यू इज सूदिंग। ओ मेरे चमकते हुए चांद। यहाँ पे तावील की बात है, अल्लामा साहब बहुत सारी बातें तावील में करते थे। यहाँ पे एक्चुअली इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की बात हो रही है, क्योंकि उनको इसमें आज़म, अल्लामा साहब को इसमें आज़म इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह से मिला था, राइट? जब वो पैदा हुए तो इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की इमामत थी। जब वो जवान हुए और इसमें आज़म लेने गए तो इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह थे, और उनको बातिन में पहचाना कि वो किस तरह से ब्राइट मून है, तो वो कहते हैं ओ मेरे माहे मुनीर, चमकते हुए चांद, तेरी याद दिल पजीर। मतलब कि मुझे तेरी याद जो है दिल में इतना सुकून देती है, इतना मिठास देती है। तुझसे फिदा है नसीर यार बदीउल जमाल। मैं अपने आप को कुर्बान करता हूँ, कहते हैं कि मैं अपने आप को कुर्बान करता हूँ किसके लिए? मेरे मौला के लिए। तो आज स्पेशल दिन इसलिए है कि आज अल्लामा साहब का बर्थडे है, और हम अपने उस्ताद को बड़े इश्क और मोहब्बत से सेलिब्रेट करते हैं, उनका बर्थडे है। तो उसके हिसाब से जो है आज कुछ बातें करेंगे उनके बारे में, क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि जिस ऑथर की किताबें आजकल हम पढ़ते हैं और इतना इल्म हम हासिल करते हैं, तो ये इल्म किस हस्ती से आया उसको भी कुछ हमें याद करना चाहिए, और स्पेशली इस दिन में कि जब उनकी पैदाइश का दिन है। तो लेट मी जस्ट शेयर माय स्लाइड। सो इट इज हैप्पी बर्थडे ऑफ अल्लामा साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। ही वॉज बोर्न ऑन 15th May एंड आई विल लेट यू फाइंड आउट द ईयर। आपका ये होमवर्क है कि आप मालूम करें कि किस साल में वो पैदा हुए थे। हम इतना तो कर सकते हैं, जिसकी किताबों से हमें इतना रूहानी इल्म मिल रहा है। 15th में तो आज उनका बर्थडे है। ही बाय द वे, उनको कभी भी केक नहीं अच्छा लगता था। केक तो बहुत ही मॉडर्न हमारे वेस्टर्न कंट्रीज में, बैक होम तो मिठाई खा ली तो बड़ी बात है। तो वी वुड हैव केक, और जब हम काटते तो हम ही खाते थे, वो बस खुश होते थे हमें देख के, हम कहते थे कि चलो हैप्पी बर्थडे। लेकिन उनके लिए हमेशा जो खुशी का बाइस होता था वो ये कि तुमने इल्म कितना हासिल किया है, कितना जिक्र करते हो, कितनी इबादत और कितनी रियाजत करते हो, यही उनकी खुशी होती थी। तो आज उनकी याद में उनकी कुछ बातें करते हैं आपके साथ, और कुछ चीज़ें भी आपसे शेयर करते हैं कि आप अगर देखते हैं नाचीज़ को या नवीन साहबा को या हमारे साथियों को कि वो इतनी मेहनत से, अगर आप देखते हैं ग्लोबल लेक्चर्स में डॉक्टर साहब को, रशीदा साहबों को इतनी उम्र हो गई है और वो इतनी किताबें ट्रांसलेट करते हैं और इतने लेक्चर्स लेते हैं, इतनी मेहनत करते हैं इस उम्र में। दे बोथ आर 18 अबव। तो अगर हम इस उम्र को लें तो कोई कहेगा कि भाई ये तो रिटायरमेंट का टाइम है, आप तो कहीं डेस्टिनेशन रिटायरमेंट होम में एंजॉय करें अपने लाइफ को। लेकिन आप ये नहीं देखेंगे अल्लामा साहब के स्टूडेंट्स के अंदर। तो ये जो दीवानगी है, ये जो पागलपन है, वो कहाँ से आया है? वो हमारे उस्ताद से आया है, क्योंकि उसने कहा कि ज़िंदगी का मकसद ही इमाम की खिदमत है, जमात की खिदमत है। तो आप देख सकते हैं कि अगर हमारे अंदर जो जोश या जो जज्बा है जमात के लिए खिदमत करने का,
وہ ہم کو ہمارے استاد ہی سے ملا ہے. اور کیوں ملا ہے میں آپ کو مثال دکھاتی ہوں آپ کو. یہ علامہ صاحب 99 ایئرس کے ہیں. علامہ صاحب ان کی رحلت جو ہے وہ 100 سال کی عمر میں ہوئی. یہ 99 ایئرس کے ہیں. آنکھوں سے نظر نہیں آتا ہے. گلاسز اتنے موٹے گلاسز ہیں. اینڈ ہی ہیڈ گلاکوما آنکھوں میں. اور آپ دیکھتے ہیں قرآن کا جو فونٹ ہے وہ اتنا بڑا ہے. لائک اسپیشلی قرآن کو پرنٹ کروایا جس میں بگ بگ ورڈز ہوں. رائٹ. اس کے باوجود with glasses big words he cannot see. He was almost kind of getting blind. But that did not stop him. Look at this it is hanging in his neck, the magnifying glass. He would always have this magnifying glass because if he wants to study, he wants to study. And most of the time ہم ان کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے. تو عمر کوئی بڑی بات نہیں ہے. عمر ایک نمبر ہے, کوئی بڑی بات نہیں. آنکھوں پہ چشمے ہیں, ہاتھوں میں میگنیفائنگ گلاس ہے, بڑے فونٹ کی قرآن کی کتاب ہے اور پڑھ رہے ہیں. کیا ہم میں ہے ایسی عاشقی؟ کیونکہ ان کو امام قرآن سے ملا تھا. قرآن کی تعلیمات کی جو تعویلات امام نے ان کے دل میں دی تھی وہ قرآن کی بڑی عزت کرتے تھے. تو اگر ہمارا استاد 99 ایئرس کی ایج میں اتنی محنت کرتا تھا تو ہم تو ابھی جوان ہیں. رائٹ. اور یہ ان کا پلنگ جس پہ ہم ان کو آئی تھنک آفٹر 99 ایئرس کی ایج میں ہم ان کو دیکھتے تھے کہ وہ پلنگ پہ سوتے تھے. اس کے پہلے یہ ریکلائنر میں ہی ہوتے تھے. وہ 16 گھنٹے 18 گھنٹے 20 گھنٹے بمشکل 2 گھنٹہ سوئے before his age was 99. تو بڑی بات تھی. After 99 years, he used to get tired. تو وہ زیادہ تھوڑا سوتے تھے. ہم کو ملتے تھے کہ وہ جاؤ وزٹ کرنے تو پتہ چلتا تھا کہ آرام کر رہے ہیں. علامہ صاحب اور آرام یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. اور اگر ہم سے کوئی کہے تو ہم کہیں گے ارے اگر ہم آرام نہ کریں تو ہم بیمار پڑ جائیں گے. رائٹ. لیکن یہ ہستی عجیب و غریب امام کے عشق میں, امام کے نام کے ساتھ ہمیشہ تازہ دم, ہمیشہ علم میں, ہمیشہ ذکر میں. کیسے ممکن ہوا؟ امام کے نام کی وجہ سے. یہ ان کا رباب کے ساتھ لے کے ذکر کرتے تھے, گریہ ہوزاری کرتے تھے. جب جشن ہوتا اور بہت مستی ہوتی, جیسے آج کلام پڑھا امام کے عشق میں, یار بدیع الجمال, جب سب ساتھی جمع ہوئے اور خوب امام کو یاد کیا, خوب گریہ ہوزاری کی, تو پھر کچھ رقص بھی کیا امام کے نام کے ساتھ. کیونکہ جب آٹومیٹکلی کوئی میوزک بجتا ہے آپ کے اندر, آپ کے پیر خود بخود چلتے ہیں, تو خود بخود رقص بھی ہوتا ہے. پھر دیکھیں کس طرح سے وہ آرٹیکلز لکھتے تھے. جو کتابیں ہم پڑھ رہے ہیں علامہ صاحب آخر دم تک لکھتے رہے. آئی تھنک لاسٹ منتھ آف ہز پاسنگ اوے کہ انہوں نے کچھ نہیں لکھا, لیکن وہ اس سے پہلے لکھتے ہی رہے کہ آرٹیکلز پہ آرٹیکلز لکھتے ہی رہے. وہ کتابیں ہم پڑھتے رہیں اور علم حاصل کرتے ہیں, بٹ ہی آلویز واز رائٹنگ ایز ویل. تو قرآن سامنے ہے اینڈ دین ہز بک اینڈ ہی از رائٹنگ. رائٹ. سو کین یو امیجن اینڈ ہاؤ لانگ. اگر ہم اپنی بات کریں, ہم کو نوٹس لینا ہو, پڑھنا ہو تو کتنی سستی ہوتی ہے. ارے کون نوٹ بک لے, کون پڑھے. ہمارے عشق کا کچھ مسئلہ ہے. عشق, ایسا عشق چاہیے ہمیں. اور علامہ صاحب کے جگری یار, جگری دوست, جو ان کے جانشین کے استادی, جو علامہ صاحب کے بعد اگر کسی کے پاس آئی ہے تو وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس ہیں. اور ہم سب ڈاکٹر صاحب کی سرپرستی میں, ہم جو بھی کام کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی سرپرستی میں کام کرتے ہیں, کیونکہ وہ ہمارے اب استاد ہیں, جو علامہ صاحب کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی کو زیادہ تر انہی کے ساتھ گزارا, ان کے علم میں گزارا. اور آج ہم دیکھتے ہیں گلوبل لیکچرز میں کہ کس طرح سے ڈاکٹر صاحب اور رشیدہ صاحبہ ہمیں علم دیتے ہیں. الحمدللہ. ایک کلام کی کتاب دیوان نصیری, یہ جو ہے اس میں ایک بہت ہی خوبصورت شعر ہے. کہتے ہیں چشم ظاہر میں نصیر الدین ہے شخص حقیر. اگر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک حقیر آدمی ہے, ایک غریب سیدھا سادہ آدمی ہے. باطناً مست ازل بھیدوں سے پر ہے یہ فقیر. باطن کے اندر وہ تمام رازوں کو اپنے اندر رکھے ہوئے ہیں. نصیر عشق کتاب عالمر فریش معیمی سروش غیب جہان سم خبر سویل صبور. کہتے ہیں کہ نصیر کی جو عشق کی کتاب ہے
وہ دنیا میں سب پہچانیں گے، سب جان جائیں گے، کیونکہ یہ کتاب جو ہے یہ خبر جو ہے فرشتے لے کر آئے ہیں کہ تمام کو پتہ چلے گا کہ نصیر کے عشق کی کتاب جو ہے وہ سارے جہان میں مشہور ہونے والی ہے۔ اور وہ عاشق کون تھا؟ امام زمان۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی عشق کے مولا میں گزاری۔ کتاب عشق نصیر شہرت جہان ہوگی، جو بات چھپی ہے وہ کل عیان ہوگی۔ الحمدللہ، شکر للہ والحمدللہ، شکر للہ والحمدللہ کہ آج ہم آپ کے ساتھ اپنے استاد کو یاد کر پاتے ہیں۔ یہ مولا کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ ہم اپنے استاد کو یاد کر سکیں اور ان کو جو کیا کہنا چاہیے، جو تحفہ دینا چاہیے، شکر گزاری دینی چاہیے، وہ ہم دے پاتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے ہمارے لیے قربانی کر کے اپنے آپ کو سیکریفائز کر کے علم سے ہمیں مالا مال کیا۔ تو الحمدللہ ہم اپنی اسٹڈی پہ آ جائیں گے۔ تو لیٹ می شیئر مائی اسکرین۔ سو ہم آ جاتے ہیں ہماری اسٹڈی پہ مولا کی رحمت سے، اور اس علم کے ذریعے ہم جو ہے ہمارے امام کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو کہ علامہ صاحب نے اپنے باطن میں پایا۔ اور آج جو ہے وہ بہت ہی اچھا یہ چیپٹر ہے، یہ پیراگراف جو ہے بہت ہی علم سے بھرپور ہے، اور نہیں معلوم ہے کہ ناچیز اس سے انصاف کر پائے گی یا نہیں۔ تو دیکھتے ہیں ہم کتنا کور کر پاتے ہیں۔ تو چلیے پہلے ان کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن حکیم کے معتد ارشادات سے یہ حقیقت ثابت ہے کہ حضرت رسول خدا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پروردگار کے بابرکت اسم اعظم کے ساتھ روحانی تعلق اور نورانی وابستگی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی اور بعد میں بھی خدا کے اسی عظیم ترین اسم اور اس کے ساتھ والے اسماء اعظام کا ذکر کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام بزرگ ناموں کی روحانیت و نورانیت اور علم و حکمت کا خزانہ دار بنا دیا تھا۔ تو پہلے اسی پیراگراف کو ہم سمجھتے ہیں۔ یہ آسان پیراگراف ہے کہ قرآن حکیم کے اندر ایسے بہت سارے اشارات دیے گئے ہیں۔ کچھ اشارات، کچھ ریفرنسز علامہ صاحب اس پیراگراف میں ہمیں شیئر کرتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ بہت سارے اشارات ہیں جس سے یہ حقیقت ثابت ہوتی ہے کہ ہمارے پیغمبر کے پاس ایکچولی اسم اعظم تھا۔ ہمارے پیغمبر کے پاس اسم اعظم تھا، اور اسی بابرکت اسم اعظم کی وجہ سے ان کا جو روحانی تعلق، نورانی تعلق جو ہے وہ پیدا ہوا تھا۔ کس سے؟ امام زمان سے، مولانا ابو طالب۔ ہمارے پیغمبر کے زمانے کے امام مولانا ابو طالب تھے، جنہوں نے ان کو اسم اعظم دیا تھا۔ تو قرآن میں بہت جگہوں پر یہ بات کی گئی ہے کہ ہمارے پیغمبر کے پاس اسم اعظم تھا، جو ان کو روحانیت میں، نورانیت میں امام علیہ السلام سے قریب لے گیا۔ اور فرماتے ہیں کہ آپ نبوت سے پہلے بھی اور بعد میں بھی، یہ بات غور کرنے کی ہے کہ ہم جو ہے اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر جو ہے پیغمبر بننے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی خدا کے اسی عظیم ترین اسم اور اس کے ساتھ والے اسماء اعظام کا ذکر کر لیا کرتے تھے۔ یعنی کہ ہمارے پیغمبر جب پیغمبر بنے اس سے پہلے بھی ان کے پاس اسم اعظم تھا۔ ایکچولی اسم اعظم سے ہی وہ ناطق بنے۔ کوئی ترقی نہیں کر سکتا جس کے پاس اسم اعظم نہ ہو، یہ بات ہم جانتے ہیں، یہ بات ہم سمجھتے ہیں۔ تو نبوت سے پہلے بھی ان کے پاس اسم اعظم تھا، اور بعد میں بھی جب وہ پیغمبر بن چکے، ناطق بن چکے، اس کے بعد بھی وہ اس سپریم نیم اسم اعظم کے ساتھ ساتھ اور اسماء اعظام کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، ہم نے تمام ناطقوں کی بات کی، اور ہم نے اسماء اعظام کی بات کی، ہم نے کلمہ طامات کی بات کی۔
और हमने ये बात की थी कि एक इसमें आजम नहीं है, इसमें आजम की तो चेन है, एक नहीं है नाम, चेन है। लेकिन ये बात हमको समझ में जो है बहुत अच्छी तरह से आती है जब हम अपने पैगंबरों के बारे में जानते हैं कि अगर वो इतने आला दर्जे पर पहुंचे तो वो कैसे पहुंचे। तो पैगंबरी से पहले, पैगंबरी के बाद भी वो अपने इस्म आजम की इबादत करते थे, और कई अस्मा इज़ाम, यानी कि वो एक इस्म के साथ खुश नहीं थे, वो कई अस्मा इज़ाम को पढ़ते थे और वो अपनी इबादत में बाकायदा थे। और आप सल्लम को अल्लाह ताला ने अपने तमाम बुजुर्ग नामों की रूहानियत व नूरानियत और इल्म व हिकमत का खजाना दार बना दिया था। यानी हमारे पैगंबर के पास जो है वो तमाम बुजुर्ग नाम, कौन से बुजुर्ग नाम? अस्मा इज़ाम, कलमात तामात, तमाम नाम जो खुदा के जो बुजुर्ग बड़े नाम हैं वो हमारे पैगंबर के पास थे, और वही उन्हीं नामों से उन्होंने रूहानी और नूरानी तरक्की की, और वो अपने इल्म व हिकमत में उनको खजाना मिला। अगर हम कुरान को देखते हैं, पूरा इल्म से भरा हुआ है। तो ये खजाना कहाँ से आया था? ये इमाम अलैहिस्सलाम से आया था। लेकिन क्या इमाम ने डायरेक्टली बैठ के पढ़ाया था? नहीं। जो लिंक है बिटवीन, क्या? वो इस्म आजम, इस्म आजम के जरिए से वो तमाम इल्म पैगंबर की हस्ती में आया था जो आज हम कुरान शरीफ में देखते हैं। तो इस पैराग्राफ का खुलासा हम गुजराती में भी कर लेते हैं ताकि सारे साथी हमारे साथ रहें। તો આ પેરેગ્રાફના અંદર આપણે એ બતાડવામાં આવી રહ્યું છે કે જ્યારે આપણે આપણા પેગમ્બરોને, આપણા નાતિકોને જોઈએ છીએ કે જેવી રીતે આપણે હઝરત ઇબ્રાહિમ અલૈહિસ્સલામની વાત કરીએ, હઝરત મૂસા અલૈહિસ્સલામ, આદમથી આપણે શરૂ કરેલું, પણ આજે આપણે હઝરત મોહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની વાત કરી રહ્યા છીએ। અને બહુ જ અચંબાની વાત જે છે અહીંયા લખેલી કે કુરાનના અંદર એક નહીં, બે નહીં, એવી ઘણી બધી આયાતો છે જેના અંદર આપણને સ્ટડી કરવાથી, તાવીલથી સ્ટડી કરવાથી ખબર પડે છે કે એમને ઇસ્મે આઝમની દોલત આપવામાં આવી હતી। અને આપણે આ જાણીએ છીએ કે કોઈ રૂહાની તરક્કી કરી નથી શકતો જ્યાં સુધી એના પાસે ઇસ્મે આઝમ ના હોય। ઇસ્મે આઝમ જે નવાફિલની ઇબાદત જ્યારે પોતે કોઈ મોમિને સાલિક પોતાના મરજીથી આ જિમ્મેદારી લે છે, કેમ કે ચાહે છે કે ઇમામને ઓળખું, ઇમામના કરીબ જાઉં, અને ઇમામ એને ઇસ્મે આઝમ આપે છે ત્યારે જ એનું તાલ્લુક જે છે એ લિંક નાનું થતું જાય છે ને ઇમામથી કરીબ થતું જાય છે। જમાત આખી ઇમામની ઓલાદ છે, એના રૂહાની બચ્ચા છે, પણ એ રૂહાની બચ્ચા જે લોકો ઇસ્મે આઝમ લઈને ઇમામના પાસે આવે છે, ઓફકોર્સ એ લોકો ઇમામથી કરીબ થઈ જાય છે। જે લોકો મહેનત નથી કરતા, દરજાતમાં છે જમાત। આ વાત આપણે ઘણી સરખા રીતે સમજી ગયા છીએ। તો ફરમાવે છે આ યાદ ઇલાહી ડિવાઇન રિમેમ્બરન્સની ચોપડીના અંદર કે पैगंबर जी छे ई पोते इस्मे आजमना द्वारा पोते पोताना रूहानी अने नूरानी ताल्लुक, रूहानी लिंक में जी आगळ वध्या हता, एनी जी वजह हती, एनी जी रीजन हतुं, ई इस्मे आजम हतुं। वगर इस्मे आजमे ई आगळ नहोता वधी सकता। तो આપણે જ્યારે ઝિક્ર ઇલાહીની ચોપડી કિતાબ વાંચી રહ્યા છીએ તો ઝિક્ર ઇલાહીની આ બુકના અંદર આપણે આ સમજણ આપવામાં આવે છે કે આપણા पैगंबर, જેને આપણે આટલું મોટું पैगंबर જાણીએ છીએ, ખુદાના આખરી पैगंबर बिलवड મહેબૂબ હતા, बिलवड હતા ખુદાના पैगंबर। ई पैगंबરની જેટલી તરક્કી થઈ, ई તરક્કીની જે વજહ છે એ ઇસ્મે આઝમ છે। હવે અહીંયા રોકાઈને હું આ વાત સમજાવું, કેમ કે આપણે જાણવું પડશે કે આ કિતાબ જ્યારે આપણે વાંચીએ છીએ ને, ડિવાઇન રિમેમ્બરન્સ, શું કામ આપણે વાંચી રહ્યા છીએ? કેમ કે આપણે આ ઇલ્મ હાસિલ કરીને આપણે પણ આગળ વધવા ચાહી રહ્યા છીએ। તો આ કિતાબના અંદર જે આપણે રાઝ મળે છે કે આપણા पैगंबर બી જે पैगंबर બન્યા ને, તો એ ઇસ્મે આઝમના દ્વારા બન્યા। તો આજે કોઈ મોમિન એ ચાહતો હોય કે હું તરક્કી કરું, હું આગળ વધું, દુનિયાવી તરક્કીની વાત નથી થઈ રહી, હું નૂરના અંદર પોતાની રૂહને આગળ વધારું, વગર ઇસ્મે આઝમે એ તરક્કી નથી કરી શકતું। ઇસ્મે આઝમ છે એ ચાવી છે। અને જેવી રીતે ઇમામ સુલ્તાન મોહમ્મદ શાહનું ફરમાન આપણે વાંચેલું કે હકીકી સુખની કુંજી જે છે એ ઇબાદત છે। તો હકીકી સુખની કુંજી, ચાવી છે, શું છે? આપણે ઇસ્મે આઝમ છે। અને હકીકી સુખ માયને શું કે કોઈ સુખને કોઈ છીની નથી શકતું, એ સુખ હંમેશા આપણા સાથે રહેશે। અને એ કેવી રીતે મુમકિન થાય, પોસિબલ કેવી રીતે થાય? જ્યારે આપણે આ વાંચીએ, આ સમજીએ કે હકીકતના અંદર આ ઇસ્મે આઝમ
જે છે એના દ્વારા, એની બદૌલત જે છે આપણા પૈગંબર પોતે એટલા આગળ વધ્યા હતા. પણ અહીંયા જે આપણે વધારે સમજવાની વાત છે, કેમ કે આપણે જે આપણી જમાત છે, સ્પેશિયલી આપણે જે ઇન્ડો પાકથી જમાત પીર સદરુદ્દીનની જમાત છે, આપણે એવું લાગે કે આ ઇસ્મે આઝમ મળી ગયું છે, બસ હવે મને આનું જ રટન કરવું છે દિવસ અને રાત અને બસ ખતમ, બીજું કાંઈ નહીં. તો આ ચીજ જે છે આપણે આ એમથી સમજવામાં આવે છે કે અહીંયા કહેવામાં આવે છે કે પૈગંબર જે હતા એને ઇસ્મે આઝમ બરાબર આપેલું હતું, ઇમામે ઇસ્મે આઝમ બરાબર આપેલું હતું, પણ એ એક ઇસ્મે આઝમની ઇબાદત નહોતા કરતા હતા. એના પાસે અસ્મા ઇઝામ ઘણા બધા ઇસ્મે આઝમ હતા. કહેવાનો મકસદ એ કે અગર આજે આપણે ઇસ્મે આઝમ ગોતવા જઈએ તો આપણે કહીશું કુરાનના અંદર જઈએ ને કુરાનના અંદર 99 ઇસ્મે આઝમ છે, પણ હકીકતના અંદર આપણે કહીએ કે આપણે કેવી રીતે મળશે. ઠીક છે, મૌલાના શાહ કરીમે પ્રમોશન આપ્યા, અમુક જમાતના મેમ્બર્સ જે લોકો આગળ આવ્યા એ લોકોને પ્રમોશન મળ્યું, તો પછી હવે આજે જેને પ્રમોશન વધારે જોતું હોય, જેને પહેલે લીધું નહીં, તો એને પ્રમોશન કેવી રીતે મળશે, કેવી રીતે આગળ વધશે. એકચ્યુઅલી આ કિતાબના અંદર આપણે આ ચીજ સમજમાં આવે છે કે જ્યારે આપણે આપણા ઇસ્મે આઝમથી તરક્કી કરીએ છીએ તો બાતિનના અંદર ઇમામની એટલી રહેમત થાય છે કે આપણને અસ્મા ઇઝામ આપે છે. તો પ્રમોશન જે છે એ બાતિનના અંદર પણ થાય છે. તો આપણે જાણવું પડશે કે જે લોકો હકીકી તौर પર, જે લોકો રિયલી સિરિયસ છે આ રસ્તામાં, એ લોકોને આ ચીજ ખબર હોવી જોઈએ એમની રોશનીના અંદર કે એક ઇસ્મે આઝમ નથી, એકચ્યુઅલી ઇસ્મે આઝમની પણ સીડી છે જે મોમિનીન આગળ વધતા જશે ઇલ્મના અંદર. કેમ કે આપણે બહુ ખુશકિસ્મત છીએ કેમ કે ક્યામતના જમાનામાં પેદા થઈ ગયા અને ઇમામના હુકુમથી અલ્લામા સાહેબે આ ચોપડીઓ લખી. તમને ખબર છે આ ચોપડી આવો રાસ પૈગંબરના બારામાં આપણે બીજે ક્યાંય નહીં મળશે, કોઈની ચોપડીમાં નહીં મળશે. આખો કુરાન વાંચી જાય, રટ્ટો લગાવી લે, પણ આ રાસ નહીં મળશે. પણ અલ્લામા સાહેબે જે પોતાની બાતિનના અંદર જે એને ઇલ્મ મળ્યો હતો અને ઇમામના હુકુમથી આ બધી કિતાબો એ લખી, તો આપણને આ ખબર પડે છે કે ઇસ્મે આઝમનો તો આખો સિલસિલો છે જે આપણા પૈગંબરને મળ્યો હતો. હવે આપણે શું ફાયદો પૈગંબરની વાત કરીને? આખી આ કિતાબના અંદર જે આપણે આ વાંચવાનો જે મકસદ છે એ સમજીએ કે આપણે અન્ડરસ્ટેન્ડ કરીએ કે એ લોકોની રૂહાની જર્ની કેવી હતી, હઝરત આદમની, હઝરત મૂસાની, હઝરત ઈસાની, હઝરત ઇબ્રાહિમની અને હઝરત પ્રોફેટ મોહમ્મદની કેવી એ લોકોની જર્ની હતી. તો એ લોકોથી આપણે લર્ન કરી શકીએ અને પોતાની જર્નીમાં આગળ વધી શકીએ. આ ઓબ્જેક્ટિવ છે, બીજો કોઈ ઓબ્જેક્ટિવ નથી. આપણે બધાની ચાહના એક જ છે કે ઇમામના કરીબ થાય, રૂહાની તરક્કી કરીને ઇમામના દીદાર, બાતની દીદાર આપણે જોઈએ, આપણું ઇસ્મે આઝમ આપણે કમ્પ્લીટ કરીએ, આપણે આગળ વધીએ. તો પૈગંબરના બારામાં એ કહેવામાં આવે છે કે એને બાતિનના અંદર કેટલા બધા ઇસ્મે આઝમ આપવામાં આવ્યા હતા અને પછી આ બધાએ નામ જે બુઝુર્ગ આપણે કહીએ ને મોટું કામ, અહીંયા ઉર્દુમાં એ લોકો કહે બુઝુર્ગ નામ, આપણે ગુજરાતીમાં મોટો કામ કે બોલ જે આપણે કહેતા હોઈએ છીએ, એના માયના એક જ છે કે જ્યારે આપણે આ બુઝુર્ગ નામોને ઓળખીએ છીએ તો આપણે ખબર પડે છે કે રૂહાનિયતના અંદર અને નુરાનિયતના અંદર આપણે આગળ વધી શકીએ છીએ. અને જે ઇલ્મનો, હિકમતનો જે ખજાનો ઇમામજીએ પેરેગ્રાફના અંદર એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે પૈગંબરને એ ખજાનેદાર બનાવ્યું હતું. તો આપણે એ ખજાનો કેવી રીતે મળે? અગેન આ કિયામતના જમાનાની મહેરબાની છે કે કુરાન આપણા પાસે છે અને કુરાન જે અરબી ભાષામાં છે, જે આપણે સમજ નથી આવડતું, પણ એની તાવીલ આપણને મળી ગઈ છે. તો જેટલું ઇલ્મ અને તાવીલ પૈગંબરને એના બાતિનમાં દેવામાં આવી હતી એ તંઝીલ તો ચોપડીમાં આવી ગઈ, કિતાબમાં આવી ગઈ, આપણા પાસે કુરાન છે, પણ એના અંદર જે બાતિન છુપેલું છે એ પણ આજે આપણા પાસે આવી ગયું છે. તો આવી રાજની વાતો કોઈ ઓર્ડિનરી માણસ નથી કરી શકતો, ઇમામનો મોમિન જ કરી શકે છે, જેના ઉપર ઇમામ રાજી થયા હોય એ જ આવી વાતો કરી શકે છે. પછી વાંચીએ આપણે, जानना चाहिए कि जिक्र कुरान को भी कहा गया है जिसकी वजह तस्मिया ये है कि कुरान के मायनी है पढ़ना, जिसकी वजह तस्मिया ये है कि कुरान के मायनी है पढ़ना. 75 सूरह क़ियामा 17 and 18. और जिक्र का मतलब है खुदा को याद करना. आन हुजूर सल्लम इसमें आजम पढ़ा करते थे.
और खुदा को याद किया करते थे, जिसके नतीजे में आप सल्लम पर अल्लाह की आखिरी किताब नाजिल हुई। चुनाचे हजरत सल्लम के नाम खुदा पढ़ने की निस्बत से इस पाक किताब को कुरान और खुदा को याद करने की वजह से जिक्र के इसम से मौसूम किया गया है। तो उर्दू पहले આપણે ઉર્દુમાં ડિસ્કસ કરીએ કે આપણે કહીએ કે शब्द कुरान, जब हम कुरान के लफ्ज को लेते हैं तो लफ्ज कुरान के मायना एक्चुअली जिक्र है। एंड रिमेंबर, जिक्र के माना क्या है? खुदा को याद करना, राइट? तो कुरान इटसेल्फ, इसका नाम जो है वो जिक्र है। और अगर हम कुरान को लेते हैं तो कुरान को हम क्या करते हैं? किताब, हम उसको पढ़ेंगे, राइट? तो जिक्र करना मतलब क्या हुआ? उसको पढ़ना। जिक्र के माने है याद करना, तो याद करने का मतलब क्या हुआ? उसको पढ़ना। तो यहाँ पे जो कुरान के आयतों का रेफरेंस दिया गया है उसमें हम जाते हैं 1 मिनट के अंदर, लेकिन यहाँ पे जो बात हमको समझाई जा रही है उसको पहले समझ लेते हैं कि जिक्र का मतलब है खुदा को याद करना, हम ये समझते हैं। हुजूर इसमें आजम पढ़ा करते थे और खुदा को याद किया करते थे। तो जब हम पढ़ने की बात करते हैं ना कि कुरान एक किताब है जिसको हमको पढ़ना है, इसी तरह हमें ये बात समझाई जा रही है कि इसमें आजम को पढ़ना है, इसमें आजम को पढ़ना है और पढ़ना ही याद करना है। यानी दो बातें हो रही हैं। अगर हम कुरान की किताब को लेके पढ़ते हैं तो वही यादगिरी है, वही जिक्र है। इसी तरह से जब हम इसमें आजम को पढ़ते हैं तो वही यादगिरी है, वही जिक्र है। तो जिक्र कुरान का भी नाम है, जिक्र इसमें आजम का भी नाम है। फिर फरमाते हैं कि हुजूर जिसके नतीजे में आप पर अल्लाह की आखिरी किताब नाजिल हुई। यहाँ पे एक ट्रिक है, आप गौर करें। अगर आप गौर से पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि एक तरफ तो कहते हैं कि कुरान का नाम जिक्र है, उसको पढ़ते थे तो जिक्र में रहते थे, इसमें आजम को पढ़ते थे तो जिक्र में रहते थे। जिसके नतीजे में, यानी कि उसका आउटकम, कुरान को पढ़ने का, इसमें आजम को पढ़ने का आउटकम ये निकला, नतीजा ये निकला कि आपके ऊपर आखिरी किताब नाजिल हुई। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि आखिरी किताब जब नाजिल हुई, उसी किताब को तो हम कुरान कहते हैं, तो वो कुरान कहाँ पढ़ रहे थे? अगर किताब जब नाजिल बाद में हुई तो वो किस किताब को पढ़ रहे थे, किसका जिक्र कर रहे थे? तो यहां हमें समझ में आता है कि दर हकीकत में उनके बातिन के अंदर कुरान था। यानी कि उनके पास जब इसमें आजम आया तो इसमें आजम जब कामयाब हुआ, जिन्हें इसमें आजम को जब उन्होंने कंप्लीट किया तो उनके अंदर कुरान नाजिल हुआ। और इसके नतीजे में जब उन्होंने रूहानी मुशाहिदात करना शुरू किए, रूहानियत उन पर नाजिल हुई, तो उन्होंने फिर क्या किया? लिखना शुरू, बयान करना शुरू किया, और लोगों ने, कातिबीन ने लिखना शुरू किया। लेकिन जो बात समझने की है कि इसमें आजम की जिक्र से उनके अंदर कुरान नाजिल हो चुका था, बाद में उसको लिखा गया, राइट? तो ये एक अजीब व गरीब बात है कि इस पे बहुत ज्यादा गौर करने की बात है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे राज हैं जो इसमें हमको गौर करने से समझ में आएगा। फिर कहते हैं कि चुनाचे हजरत के नाम में खुदा पढ़ने की निस्बत से इस पाक किताब को कुरान और खुदा को याद करने की वजह से जिक्र के इसम से मौसूम किया गया है। तो हम जब जिक्र की बात करते हैं कि भाई जिक्र क्या है, पूरी किताब जो है जिक्र पर है, राइट? हम जिक्र को समझ रहे हैं, यादगिरी को समझ रहे हैं। तो कह रहे हैं कि इसी वजह से कि हजरत ने जिक्र किया था, हम इस किताब को भी जिक्र कहते हैं। कुरान का एक नाम जिक्र है, इसकी पढ़ने को हम खुदा की याद कहते हैं। तो एक सिंपल पैराग्राफ, लेकिन जब हम कुरान की आयतों की स्टडी करेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। गुजराती में खुलासा कर लें, फिर हम आयतें डिस्कस करते हैं कि इस આ પેરેગ્રાફના અંદર આ સમજાવવામાં આવી રહ્યું છે કે જે કુરાન જે છે ને, આપણે શબ્દ કુરાન, એના માયના અગર આપણે લઈએ ને તો એનો માયના થાય છે વાંચો, રીડ, રાઈટ? રીડિંગ ઇઝ વોટ? રિસાઇટેશન, રીડિંગ, રાઈટ? તો કહે છે કે જ્યારે આપણે ખુદાના પૈગંબર કુરાનને વાંચતા હતા, કેમ કે એને કહેવામાં આવ્યું હતું રીડ કર, કુરાનને વાંચ, તો એનું વાંચવું જે છે ને એ જ જિકર હતું, એ જ યાદગીરી છે. કુરાનની ચોપડીને જ્યારે આપણે વાંચીએ તો એ જ જિકર છે.
પછી કે છે ઇસ્મે આઝમને જે વાંચતા હતા, રટન કરતા હતા, એ વાંચવું જ ને, એને વાંચતા હતા, તો એ પણ zikr છે. તો અહીંયા જે આપણને સમજાવવાની વાત થઈ રહી છે એ છે કે આ સમજો કે કુરાન જ્યારે વાંચતા હતા એ પણ zikr છે, ઇસ્મે આઝમ પણ વાંચતા હતા એ પણ zikr છે. આ બી યાદી છે અને આ બી યાદી છે. હવે આમાં એક બીજી ચીજ આપણને સમજમાં આવે છે કે આપણે હંમેશા કહીએ છીએ ને કે ઇલ્મ અને ઇબાદત બે હોવું જોઈએ. તો આ ચીજ આમાં ખુલાસો થઈ જાય છે કે જ્યારે કુરાન શબ્દના માયના આગળ વાંચવું છે તો આપણે જ્યારે કુરાને વાંચીએ તો એ ઉપર યાદી છે, અને જ્યારે આપણે ઇસ્મે આઝમની ઇબાદત કરીએ એ પણ યાદી છે. તો ઇલ્મ બી ઇબાદત છે અને ઇબાદત નુરાની ટાઈમની ઇબાદત પણ ઇબાદત છે. પણ અહીંયા હજી ખુલાસો મળે છે કેમ કે આપણે જમાત જે છે ઇસ્મે આઝમ નુરાની ટાઈમને જ આપણે સમજીએ અને પછી અસ્મા ઇઝમ ક્યાં છે, બીજા ઇસમ ક્યારે આવે, તો જ્યારે આપણે zikr મહેફિલ કરીને ઘણા બધા zikr આપણે કરીએ એ બધા ઇસ્મે આઝમ છે, બધા એના નામ છે, બધા એની તારીફો છે. તો આ બધી ચીજો આપણે મગજમાં રાખવાની અને સમજવાની જરૂર છે કે જ્યારે આપણે જોઈએ છીએ કે આપણા પેગમ્બરની સફરના અંદર એ રૂહાનિયતમાં એટલા આગળ વધ્યા, તો એ કેવી રીતે આગળ વધ્યા? ખાલી 1 કલાકની ઇબાદત કે 24 કલાકની ઇબાદત? હા, 1 કલાકની ઇબાદત બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, પણ એના ભેગા જે આપણે જે રાત તમે વાત કરતા હતા કે ઇસ્મે આઝમ એવો શબ્દ છે જે આપણને ઇમામથી કરીબ લઈ જાય છે, પણ જે કરીબ જે હસ્તીના અંદર જાય છે એ હસ્તીના અંદર એ ઇશ્ક હોવું જોઈએ. જ્યારે એને ઇલ્મ મળે છે તો એને બી વાંચે છે અને એને એક નામથી નથી પુકારતો, એને ઘણા બધા નામોથી પુકારે છે. તો આ બધી ચીજો મગજના અંદર રાખવાની છે. પણ ઇસ્મે આઝમ એ પહેલી ચીજ છે જે આપણને ઇમામના કરીબ લઈ જાય છે. વગર ઇસ્મે આઝમે આ બધું નથી થવાનું. ઇસ્મે આઝમ પહેલે જોઈએ. અગર તરક્કી કરવી છે તો ઇસ્મે આઝમ પહેલે જોઈએ. તો મને ઉમ્મીદ છે કે આપણે આ પૂરું એક જે ચીજ છે એને સમજી રહ્યા છીએ અને ટુકડામાં નથી, કેમ કે આજ સુધી જ્યારે આપણા પાસે ઇલ્મ નહોતું તો આપણે આમ વિચાર કરતા હતા. હવે આપણે સમજીએ છીએ કે હોલ પિક્ચર આપણા સામે છે. તો અને અહીંયા જે ઇન્ટરેસ્ટિંગ વાત સમજ આવી કે ખુદા કહે છે આમાં ચોપડી આમ કહેવામાં આવ્યું છે કે કુરાન વાંચતા હતા તો એ પણ zikr હતું, ઇસ્મે આઝમ વાંચતા હતા એ પણ zikr હતું, બે યાદી હતી. તો એના નતીજા, એના રિઝલ્ટના અંદર પેગમ્બર ઉપર કિતાબ નાઝિલ થઈ, પેગમ્બર ઉપર કુરાન નાઝિલ થયું. તો અહીંયા ક્વેશ્ચન ઊભો થાય છે. એક તરફ તો તમે કહો છો કે ભાઈ કુરાન નાઝિલ થયો, વાંચતા હતા, એ zikr કરતા હતા અને ઇસ્મે આઝમનું ઉપર zikr કરતા, તો એના બાદ પછી કુરાન કેવી રીતે નાઝિલ થયું? તો આમાં આપણે આ સમજણ મળે છે કે જે મોમિને સાલેક સાચા દિલથી નુરાની ટાઈમની ઇબાદત કરી છે ને, એ પોતે એના બાતિનના અંદર ઇલ્મનો શોખ પેદા થાય છે. ઇમામ એના અંદર ઇલ્મ આપે છે. અને પછી આપણે તો પેગમ્બરની વાત કર્યા છે, આપણે તો કોઈ હસ્તી નથી ધરાવતા, આપણે તો કાંઈ નથી. તો પણ એક સમજાવવા માટે, સમજવા માટે આપણી જગ્યા ઉપર આપણે કહેશું કે આપણા દિલના અંદર ક્વેશ્ચન્સ આવ્યા કે આ શું, રૂ શું, નૂર શું? અને જ્યારે આપણે ક્વેશ્ચન પૂછવા માંડીએ તો આ ઇસ્મે આઝમની તાકાતથી આપણે ઇલ્મ મળવા માંડે છે. આપણે પોતે ઇલ્મ મજલિસમાં આવી જઈએ છીએ. પણ અહીંયા આપણે વાત કરીએ છીએ આપણા નાતિકની, હાતિમુન નબીનની, રાઈટ? તો એના સાથે શું આપણે સમજાવવામાં આવી રહ્યું છે, કેમ કે આજે આપણે જે ડિસ્કસ કરી રહ્યા છીએ પેગમ્બરને ડિસ્કસ કરી રહ્યા છીએ. તો પેગમ્બર જે વાંચતા હતા કિતાબ, એ પોતાના બાતિનના અંદર વાંચતા હતા. ઇસ્મે આઝમ બાતિનના અંદર. પછી આ બેના રિઝલ્ટના અંદર એક કિતાબ આપણા માટે લાવવામાં આવી, જેમાં લખવામાં આવ્યું. આજે આપણા પાસે એક કિતાબ છે જેને આપણે કુરાન કહીએ છીએ. કહેવાનો મકસદ આ પેરેગ્રાફના અંદર કે ઇસ્મે આઝમ બી zikr છે, કુરાન પણ zikr છે. તો આપણે હવે આ આયતના અંદર જઈએ, જે અહીંયા ખુલાસો જેનો આપણે આપવામાં આવ્યો છે, અને એ આયત છે સૂરે કિયામાની આયત છે 17/18, અને એમાં આપણે વાંચીએ ઇન્ના લૈના જમઉ વ કુરઆન ફઇઝા અકરાનાહુ ફત્તબી કુરઆન. શું ટ્રાન્સલેશન છે ઉર્દુમાં? અરે હું ગુજરાતીમાં જ બોલી છું, માફી. તો પહેલે ઉર્દू में, तो एक આપણું સિસ્ટમ બિલ્ડ થઈ જાય. ઉર્दूમાં उर्दू के अंदर ट्रांसलेशन, इसका जमा करना और पढ़ना हमारे जिम्मे है. क्या फरमा रहे हैं खुदा ताला कुरान के अंदर सूरह क़यामा 17 के अंदर कि इसका जमा करना और पढ़ना हमारे जिम्मे है. और 18 की वर्ष में कहते हैं
ہم جب اسے پڑھ لیں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں. ہم جب اسے پڑھ لیں تو آپ اس کی پیروی کریں. پیروی مطلب فرمان برداری، آپ اس پہ عمل کریں. تو یہ دو قرآنی ورسز جب ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے جو ہمیں دیکھنا ہوگا ٹرانسلیشن کہ یہاں پہ جو جمع کرنے کی بات کی گئی ہے، رائٹ، کہ اس کا جمع کرنا جو ہے وہ ہمارے ذمہ ہے. تو خدا تعالیٰ کیا جمع کر رہا ہے؟ اگر ہم انگلش میں دیکھتے ہیں تو کلیکشن کی بات، ٹوگیدر کی بات، پروموگلیٹ کی بات، تو وہ جمع کرنا جو ہے وہ کیا بات ہو رہی ہے، رائٹ، خدا کی. تو علامہ صاحب اپنی کتابوں میں سمجھاتے ہیں، اور یہ جو سمجھ ہے وہ ایکچولی ان کی کتاب جو ہم سنڈے کو کر رہے ہیں، دعا ایسنس آف عبادت، جو ہم ڈاکٹر صاحب رشید صاحبہ کے ساتھ کر رہے ہیں، اس کتاب کے اندر اس آیت کو سمجھایا گیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ جب خدا تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو جمع کرنا اور اس کا پڑھنا، یہ ہماری ذمہ داری، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک مومن سالک اپنی مرضی سے اسم اعظم کو لیتا ہے اور پڑھتا ہے، اور پڑھتا ہے، ابھی پڑھنا ایک دفعہ بھی ہوتا ہے، 2 دفعہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جمع کرنا. جمع سے کیا ہے؟ کلیکشن، کوانٹٹی میں، ابنڈنس میں، ذکر کثیر، ہم نے یہ سب چیزیں سیکھی ہوئی ہیں. تو جب اس کو کوانٹٹی میں پڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ خدا کہتا ہے کہ یہ میرے ذمہ ہے. مومن صالح شروع کرتا ہے اپنے رستے کو اور وہ پڑھنا شروع کرتا ہے اپنے دل کے اندر، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جب یہ کوانٹٹی بن جاتی ہے، کلیکشن اس کا بن جاتا ہے، تو خدا کہتا ہے کہ یہ میرے ذمہ ہے. تو اور پھر کہتے ہیں کہ جو ہے وہ آپ جب اس کو بہت سارا پڑھ لیں تو اس کے تابع ہو جائیں. تو پہلے اس کی بات کرتے ہیں، اس والے آیت کی 17 کی، کہ کیا معنی ہے کہ خدا تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ذمہ ہیں. تو پہلے وہ اپنے آپ پہ اپلائی کرتے ہیں کیونکہ ہم کمزور ہیں، ہم کو سیکھنا ہے، ہمیں راستہ ڈھونڈنا ہے. تو جب ہم اسم اعظم کی دولت کو لیتے ہیں، جب ہم اسم اعظم کی دولت کو لیتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں، یہ پڑھنا ہے نا، ریڈنگ کرنا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہم اس کو یا علی کو لکھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں. جب اس کو پڑھتے ہیں اور جب بہت زیادہ پڑھتے ہیں، کلیکٹ کرتے ہیں، رائٹ، تو اس کے بعد خدا جو کہتا ہے کہ یہ میرے ذمہ ہے، اس کو پڑھانا میرے ذمہ ہے. تو خدا کے ذمہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا مطلب ہوا؟ تو یہاں پہ جو راز کی بات ہے وہ یہ کہ جب ایک مومن سالک محنت کرتا ہے اور کوانٹٹی میں محنت کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کو آٹومیٹک کر دیتا ہے، وہ خود ہی اپنی ذمہ داری سے اس کو چلاتا ہے. یعنی کہ اس کی فرشتے ہمارے اندر اس کا ورد کرتے ہیں، رائٹ. تو اس کے فرشتے یہ ورد کرتے ہیں. تو ہمارے لیے اس میں کیا تعلیم ہے؟ تو ایک اور میں آیت آپ کے ساتھ شیئر کروں جس کو ہم کو ڈسکس کرنا چاہیے، جس سے ہمیں سمجھنے میں مدد ملے گی کہ یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ کیا بات ہو رہی ہے. وہ بات ہو رہی ہے 16/98، ہاں یہ والی آیت. تو یہ جو ہے سورہ نحل ورس نمبر 98 ہے، جس کے اندر کہا جا رہا ہے قرآن پڑھنے کے وقت راندے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کر لو. قرآن پڑھتے وقت شیطان سے اب آپ جو ہے وہ خدا کی پناہ طلب کر لو، رائٹ. تو خدا کی پناہ کیسے طلب کریں؟ اس کے کیا معنی ہیں؟ معنی یہ ہے کہ یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جب ہم اس میں اعظم جب پڑھتے ہیں، رائٹ، جب ہم اس میں اعظم کو پڑھتے ہیں تو اس آیت کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ پڑھنے کے وقت، قرآن پڑھنے کے وقت تم خدا سے شیطان کی پناہ مانگو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جانتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ انسی بھی ہے، جنی بھی ہے، اور وہ اپنے وسوسوں سے مومن کو جو ہے وہ بھٹکاتا ہے، اور وہ نہیں چاہتا ہے کہ مومن اپنی روزانہ کی عبادت میں وہ آگے سے آگے بڑھے. تو کیا کرتا ہے شیطان؟ ان کو بھٹکاتا ہے. تو یہاں پہ جو بات ہم کو سمجھائی جا رہی ہے کہ قرآن پڑھنے کے وقت، یعنی کہ جب ہم قرآن کو اتنا پڑھیں، یعنی ذکر کو، اس کی یاد کو اتنا پڑھیں کہ جمع کر لیں، تب ہم جو ہے وہ شیطان سے خدا سے شیطان کی پناہ مانگ سکتے ہیں. یہاں پہ جو بات سمجھنے کی ہے وہ بہت نازک اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے. عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں جب خدا سے دعا مانگتے ہیں کہ یا مولا ہم کو شیطان سے پناہ میں رکھ،
तो हम उसकी पनाह में चले जाएंगे। लेकिन कुरान की जब हम इन आयतों को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि पढ़ने, यहाँ पे पढ़ने के वक्त लिखा है, बट यहाँ हकीकत में जब हम मायना इसकी तावील की रोशनी में देखते हैं तो यहाँ पे ये मायना निकलते हैं कि कुरान को पढ़ने के बाद तुम जो है वो शैतान की पनाह मांगो। रिमेंबर, कुरान के मायना क्या है? पढ़। क्या पढ़ना है हमको? पहले इसमें आजम की पढ़ने की बात करते हैं, क्योंकि हमें इसमें आजम को समझना है। सबसे बड़ी बात इसमें आजम है। तो यहाँ पे हमें ये समझाया जा रहा है कि जब इसमें आजम को पढ़ के जब जमा कर लेते हैं, यानी क्वांटिटी में पढ़ लेते हैं, तब हमारे अंदर ये काबिलियत आती है कि हम खुदा से कहें कि या खुदा हमको शैतान से बचा। यानी कि जब शुरू शुरू में हम इबादत करते हैं तो हमारे पास ये ताकत नहीं होती है कि हम खुदा से मांगे कि जो है वो हमको शैतान से बचाए। यानी कि हमें अपनी फ्री विल से बिगिनिंग के अंदर इतनी मेहनत करनी है, अपने ध्यान को पकड़ के रखना है कि हम जो है उसकी इबादत करें। और जैसे कि हमने समझा कि कुरान के मायने पढ़ने के हैं, इसमें आजम के मायने पढ़ने के हैं। पैगंबर की मिसाल देते हुए हमें ये बताया जा रहा है, हमें ये समझाया जा रहा है कि उन्होंने जब पढ़ना शुरू किया तो उसके नतीजे में उनको शैतान की से पनाह मिली। उनकी इबादत, उनकी रियाजत के नतीजे में उनको पनाह मिली। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमें समझने के लिए। तो इसको दोहराते हैं गुजराती के अंदर ताकि ये बात क्लियर हो जाए थोड़ी सबके लिए, કે જ્યારે આપણે સૂરે ક્યામાના અંદર આને વાંચીએ છીએ કે આમાં એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે તમે વાંચો, તમે જમા કરો અને પછી તમે એને તમારાથી વંચાવવું પછી અમારા ઝિમ્મે છે। તો તમે વાંચો, પછી જ્યારે જમા થઈ જશે પછી અમે એને વંચાવશું। અહીંયા જે વાત છુપાયેલી છે, જે રાજ છુપાયેલું છે, એકચ્યુઅલી એ અજંપ્યા જાપની વાત છુપાયેલી છે કે ખુદા કહે છે કે તમે વાંચો અને જ્યારે તમે વાંચશો અને પછી એનું કલેક્શન થઈ જશે ને, અબન્ડન્ટ આપણે ખૂબ વાંચ્યું જેવી રીતે વાંચવાનું હક છે, તો પછી અમારા ઝિમ્મે થઈ જશે। કોઈ મોમિને સાહેબ જ્યારે બહુ જ યાદગીરીમાં રહે છે ને તો ઇસ્મે આઝમ જે છે એ ઓટોમેટિક થઈ જાય છે। અગર તમે એનો તજરબો કરવો હોય તો તમે જે છે, હું કહું કે યા અલીની તસબીહ લ્યો અને એક દિવસ બેસી જાઓ અને એને 10,000 વખત વાંચી દો। એક દિવસના અંદર તમે ઇન્ટેન્શન કરો કે ભાઈ હું આજે યા અલી જે છે એ 10,000 વખત હું કહીશ, યાલી 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 10,000 વખત। તમે યકીન કરો, તમે આ માજીઝો જોઈ શકશો કે તમારા પોતાના અંદર આ યાલી યાલીનો zikr ચાલશે। તમે અલ્લાહીનો zikr લ્યો, અલ્લાહી zikr સૌથી નાનું બ્યુટીફુલ zikr છે, અને બેસી જાઓ એક વખત અને 10,000 વખત વાંચી જ્યો। અને નાનકડો zikr છે, વાર નહીં લાગશે 10,000 કરવામાં, અમુક કલાક લાગશે, પણ બેસી જાઓ, ઇન્ટેન્શન કરી લ્યો અને 10,000 વખત વાંચી લ્યો। પછી તમે કામ બી કરતા હશો તો ઓટોમેટિકલી તમારા અંદર એ zikr આવશે। આ એક ઝલક છે, આ એક આપણા માટે એક સમજ છે કે અગર આપણે ચાહીએ છીએ કે આપણું ઇસ્મે આઝમ ની ક્વોન્ટિટી વધે, કેમ કે ક્વોન્ટિટી વધારવા વગર અજંપ્યા જાપ નથી થવાનું। આપણા પીરોએ આપણે આ સમજાવેલું છે। અને આ જ વાત કુરાનના અંદર સૂરે કિયામાના અંદર જો આપણે આ કનેક્ટ કરવાના છે કે આ સૂરા કિયામતના અંદર તમને ખબર છે ને, જ્યારે આપણે ઇસ્મે આઝમની કામયાબી માંગીએ છીએ તેનું માઇનસ શું છે? કિયામત માંગીએ છીએ આપણા પોતાને અંદર કે નફ્સ મરી જાય અને મારું ઇસ્મે આઝમ કામયાબ થઈ જાય। તો ખુદા તાલા પેગમ્બરની મિસાલ દઈને સમજાવે છે આપણે કે તારું જે ઇસ્મે આઝમ વાંચવાનું છે, જે તું વાંચે છે કુરાનને, એને જ્યારે તું એને ભેગું કરી લઈશ, જમા કરી લઈશ, તો પછી એને વંચાવવું એ અમારા ઝિમ્મે છે। તો હકીકતના અંદર તાવીલની રોશનીના અંદર આ આયતના અંદર અજંપ્યા જાપની વાત થઈ રહી છે। પણ અહીંયા જે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ચીજ અહીંયા જે અલ્લામા સાહેબ સમજાવે છે પોતાની કિતાબના અંદર દુઆ મગઝે ઇબાદતના અંદર, અલ્લામા સાહેબ કહે છે કે તમે આ આયતને બી વાંચો અને એમાં જોવો તમે કે ખુદા કહે છે કે જ્યારે તમે કુરાન વાંચો છો ત્યારે તમે શૈતાનની પનાહ માંગો। વાંચવાના પહેલા નહીં, જ્યારે તમે વાંચો છો। યાની કે એક એવો મોમિન જે ઇસ્મે આઝમની બરાબર જ્યારે ઇબાદત કરે છે અને પછી જ્યારે ઈ ખુદાથી પનાહ માંગે છે શૈતાનથી,
શેતાનની, તો ખુદા એને પનાહ આપે છે. મતલબ આ બેને મલાવીને વાંચો, સમજો કે ત્યારે જ અજંપિયા જાપ થશે, એના પહેલે નહીં થશે. આજે આપણે બીમારી શું છે? યાદગીરીમાં નથી રહેતા. મૌલાનું ફરમાન આપણે યાદ કરીએ કે યાદગીરી રાખવાનું કામ ઘણું જ કઠણ છે. તો યાદગીરી કેમ નથી રહેતી? આપણે આ સમજાવવામાં આવ્યું છે કુરાનના અંદર કે તમે અગર જ્યાં સુધી એને ક્વોન્ટિટીમાં નહીં કરશો, ઝિક્રે કસીર, અલ્લામા સાહેબ પોતાના કલામના અંદર કહે છે ઝિક્રે કસીર સે કલ્બ કો પુરનૂર કર, કે તું વધારે zikr કરીને પોતાના દિલના અંદર, પોતાના દિલને નૂરથી ભર. આ કલામના અંદર તાલીમ દીધી છે. તો મકસદ એ થયું કે જ્યારે આપણે કહીએ છીએ કે યા મોલા હું કેમ, મને યાદી નથી રહેતી, હું કેમ વસવસામાં, હું કેમ તરક્કી નથી કરતી. કેટલા બધા મારા ભાઈ બહેન મને કહેતા હોય કે અમે એટલી મહેનત કરીએ છીએ, આમ કરીએ છીએ, પછી વસવસા આવે છે, યા અમુક અલગ અલગ વાતો, નેગેટિવ વાતો થતી હોય છે, ના ઉમેદીની વાતો થતી હોય છે. એની વજહ શું છે? એની વજહ શું છે? ના ઉમેદી મોમિના પાસે આવે ક્યાંથી? ઇમામનું ફરમાન છે કુરાનના અંદર આપણે વાંચીએ, લા તકનતુ મિર રહેમતિલ્લાહ, કે એની રહેમત તો એટલી બધી છે, પછી ના ઉમેદી કેમ આવે છે આપણા અંદર? કેમ કે શૈતાન મરદૂદથી જ્યારે આપણે પનાહ મળશે ને, જ્યારે આપણે પોતે મહેનત કરશું, તો જ્યારે આપણે આપણા ઇસ્મે આઝમ પર ખૂબ મહેનત કરશું, અને મહેનતના માટે હિંમત જોઈએ છે. આપણે ઇમામે કીધું, કલામે મોલામાં પણ મોલા ફરમાવે છે કે હિંમત જોઈએ છે. આપણે પોતાની મરજીથી જ્યારે હિંમત કરીને ઇસ્મે આઝમને વાંચશું, તો પછી આપણે પનાહ માંગી શકશું. અને આ બધું ખુલાસો આપણે પેગમ્બરની મિસાલ લઈને કરી રહ્યા છીએ. તો આપણે જાણીએ છીએ પેગમ્બરને જ્યારે પૂછવામાં આવ્યું કે ભાઈ તારો શૈતાન ક્યાં છે, તો કહે છે મારા હાથ ઉપર એ ઇસ્લામ કબૂલ કરી લીધો, મુસલમાન થઈ ગયો છે. તો આપણો શૈતાન કેમ મુસલમાન નથી થતો? શું કમી છે? કમી છે જમા, કલેક્શન, જે ક્વોન્ટિટીમાં zikr થવું જોઈએ ને એ નથી થયું, એટલે મેટર કરે છે. અગર તમે બુક ઓફ હિલિંગની ચોપડી વાંચશો તો અલ્લામા સાહેબે નંબર દીધેલું છે કે 1,24,000 વખત તમે કરી લો, કોઈ ઇસ્મે આઝમને વાંચી લો. 99 ઇસ્મે આઝમ કુરાનના અંદર છે, વાંચી જાઓ. તમે કરી શકો છો તો 40 દિવસનું ઇન્ટેન્શન કરી શકો છો, મોટા મોટા ક્વોન્ટિટીના અંદર તમે કરી શકો છો. આ બધી ચીજો આપણને ઇલ્મ દેવામાં આવી રહ્યું છે આ કિતાબોના અંદર. પણ શું કમી છે? પ્રેક્ટિસની કમી છે. જ્યારે આપણે પ્રેક્ટિસ નથી કરતા તો કેટલું બી વાંચી લઈએ, જે સમજ આપણે આવી જોઈએ, પછી એનો ફાયદો, જો આ જે છે ફાયદો, આ બીજી આયત અંદર કહે છે કે હમ જબ ઇસે પढ़ લેं તો આપ इसके पढ़ने की पैरवी करें. જ્યારે આપણે વાંચી લઈએ તો પછી એની પેરવી કરો. પેરવી મતલબ તાબેદારી. હવે જ્યારે તાબેદારી, આ જે શબ્દ તાબે અંદર છે કે આપણે તાબેદારી, ફરમાન બરદારી, કન્વિક્શનના સાથે આપણે ફરમાન બરદારી, તો આપણે ફરમાન બરદારીની વાતો તો કરીએ છીએ, પણ એના માટે જે પહેલે મહેનત લેવાની છે એ મહેનતને નથી સમજતા. હાલાકી આપણા પીરોએ આપણે ઘણું જ્ઞાન અંદર સમજાવેલું કે ઇસ્મે આઝમ જે છે બહુ મોટી ચીજ છે, આપણે ઇસ્મે આઝમ પર ખૂબ મહેનત કરવાની છે. તો આજે ક્યામતના જમાનાના અંદર ઇમામની રહેમતથી આપણે સમજ આપવામાં આવી રહી છે કે યા ઇસ્મે આઝમ તો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, આપણે ખબર હતી આ વાત. એટલે જ, અને આપણે બહુ ખુશકિસ્મત હતા આપણી જમાત કે ઇમામના ભેગા રહ્યા અને આપણે ઇસ્મે આઝમની દોલત મળતી હતી. પીર નાસિર ખુસરોની જમાતને ઇસ્મે આઝમ નહોતું મળતું હતું. આજે અગર આપણે ઇસ્મે આઝમમાં ખૂબ તરક્કી કરેલી હતી અને આપણે ઇલ્મ મળે તો આપણી તરક્કી તો ફટાફટ થાય, વાર ન લાગે. પણ ભૂલ શું થઈ ગઈ છે કે ઇસ્મે આઝમને જેવી રીતે આપણે ઇબાદત કરવી જોઈએ, તમને ખબર છે ઇમામ સુલતાન ઉમર શાહનો ડાયમંડ જ્યુબલી, પ્લેટિનમ જ્યુબલીનો મોલા મેસેજ કહે છે કે જેવી રૂહાની તરક્કી હું ચાહતો હતો એવી થઈ નહીં. તો આ કુરાનથી આપણે આજે આ સમજી રહ્યા છીએ. જ્ઞાનમાં તો પહેલેથી આપણે સમજાવેલું છે કે જી મહેનત આપણે આપણા જાપ ઉપર કરવાની છે, જેવી રીતે મહેનત કરવાનું હક છે, રટન કરવાનું, રટનને મહેનતથી કરવાનું, પોતાના અમાલને સાચવાનું, અને પછી ઇલ્મ પણ હાસિલ કરવાનું. જ્યારે આપણે આ ફરમાન બરદારી કરીએ છીએ ને ત્યારે આપણું ઇસ્મે આઝમ જે છે એ ઓટોમેટિક થાય છે. અને પછી આપણાથી જે ફરમાન બરદારી છે ને એ પણ આસાનીથી થાય છે. કેમ કે પછી એ આપણથી કરાવે છે, આપ ચલાવે, આપ બોલાવે. આપણે પોતે તો કંઈ કરતા નથી હોતા. આ બધા જ્ઞાનના પાર આપણે ફટાફટ બોલશું, પણ જ્યાં સુધી આપણે જે અંડરલાઈન લર્નિંગ છે, મેસેજીસ છે, જે આપણે નહીં સમજશું તો આપણે આગળ નહીં વધી શકશું. મારા ખ્યાલથી આજે આપણે રોકીએ.
કેમ કે મને લાગે છે આ થોડુંક લાંબુ ચાલશે, 2-3 ક્લાસ લાગશે, કેમ કે આમાં ઘણા બધા આપણા માટે સમજવાના મેસેજીસ છે. હાલાકી હું અહીં ઘણી વિચાર કર્યો તો વધારે કરશું, પણ રશ કરવા કરતા આપણે કોઈ ક્વેશ્ચન છે, કોઈ સમજવાની હજી કચાશ છે તો મને પૂછો, તો આપણે એને ડિસ્કસ કરીએ, તો પછી આપણે બરાબર સમજીને આગળ વધીએ. તો અહીંયા આપણે રોકીએ છીએ. તે તો માણસ કેરો પૂતલો, શું કહે છે? તે તો માણસ કેટલો પૂતલો, તેને જાપ મેં જપાવું. હકીકતમાં બિલકુલ પરફેક્ટ જ્ઞાન છે. મેં બોલાવું ને મેં ચલાવું. પણ આપણે જે ભૂલ છે ને આ જ્ઞાનને સમજવામાં, આપણે કે હું તો બેઠો છું, મોલા તું ચલાવ, તું કર બધું, તું મને બોલાવ, મારે હું તો તું બોલાવ, તું બોલાવીશ, તું કરીશ. નહીં, આપણા પાસે ફ્રી વિલ છે. આપણે પહેલો પગથિયો આપણે લેવાનું છે. ઇમામ પોતે કહે છે તમે એક કદમ આગળ આવો છો તો હું 100 કદમ તમારી પાસે આવું છું. આ બેતુલ ખ્યાલના ફરમાનના અંદર છે. ઇમામ સુલતાન મશન આપણે વાંચેલી, આપણે સ્ટડી કરેલી. મને ઉમ્મીદ છે કે તમને યાદ હશે કે આપણે બેતુલ ખ્યાલના ફરમાન ડિસ્કસ કરેલા, એમાં આપણે આ વાંચેલું હતું. તો ઇમામના તરફથી તો રહેમત છે, પણ આપણે શું એ રહેમતને સમજ્યા છીએ? તો આ એક બહુ મોટું આપણા માટે લેસન છે કે આપણે એના પર વિચાર કરીએ. કોઈના પાસે सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही खूब। जो एसेंस है इन चीज़ों का वो बहुत अच्छे से समझ में आता है कि हम सब जो है, जो आउटकम चाहते हैं, जो रिजल्ट्स चाहते हैं, जैसा हम मौला के करीब होना चाहते हैं या खुश रखना चाहते हैं इमाम ज़मान को, उन तमाम चीज़ों का जो आधार है वो हमारी अपनी मेहनत पर है। तो मेहनत करना जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मेहनत आई थिंक हम उस वक्त करते हैं जब हमारे इश्क और फरमान बरदारी में पाकाई होती है, क्योंकि जब हम फरमान बरदार होंगे तो हम मेहनत करेंगे पूरी। तो बहुत रिलेटेड है कि हम फरमान बरदारी को अच्छे से समझें। और सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि के बहुत सारे फरमान जो है वो फरमान बरदारी के ऊपर जो है वो हमने बहुत मर्तबा इनके ऊपर बात की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टॉपिक, और ये बहुत अच्छा हमारे लिए सोचने का मुकाम है। सो अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स के पास अगर या कोई कमेंट है या रिफ्लेक्शन है तो आप आगे आ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह करीमा साहबा ने हमारे लिए रेफरेंसेस यहाँ पे पोस्ट कर दिए हैं तमाम दोस्तों। जीनत साहिबा here says actually the shaitan brings us closer to Mawla. Is this right? शैतान doesn't bring closer to मौला. नो नो नो, नहीं. हम ये कह रहे हैं कि हमको ये समझना है कि हम क्यों वसवसों में रहते हैं. इसलिए वसवसों में रहते हैं क्योंकि जब हम इल्मी क्लासेस के अंदर ऐसी बातें सुनते हैं ना कि भाई हम तरक्की क्यों नहीं कर सकते हैं, या हमें क्यों मुश्किल होती है, या हमें क्यों नाउमीदी होती है, या हम क्यों तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं. तो इसको इस बात से समझाया जा रहा है कि हम जो है वो जो हमारा काम है, यानी कि अपनी इबादत को पाबंदी से अदा करना, अपनी रियाजत को पाबंदी से अदा करना, उसके बदले में वो हमें इमाम की मर्जी आएगी, क्योंकि वो देखेगा कि हम कितना सिंसियरली उसके करीब जाना चाहते हैं. जब तक वो सिंसेरिटी सिर्फ अंदर की नहीं, मेहनत से साबित होनी चाहिए, तब हमारे अंदर वो ताकत, वो रहमत वो भेजता है कि शैतान जो हमें वसवसे नहीं दे सकता है. यानी कि एक मकाम की बात है, एक ऊंचे मकाम की बात है, नीचे के मकाम की बात नहीं है. तो हम जो है वो गरीब नीचे के मकाम पर हैं, इसलिए शायद वसवसों में जाते हैं, इसलिए हम बहुत सारी दफा जो है नाउमीदी की बातें सुनते हैं. लेकिन कहने का मकसद ये है कि बजाय हम नाउमीद हो, हम ऐसे इंटेंशंस करें जिसमें हम क्वांटिटी के साथ जिक्र करें. जो समझाया जा रहा है सूरह क़यामा के अंदर कि अगर हम बहुत मेहनत से क्वांटिटी में जिक्र करते हैं तो उसको अजंपिया जाप बनाना खुदा ताला का काम है. हमारी कोई ताकत नहीं है इसको हम अजंपिया जाप बनाएगा उसको, हमें सिर्फ मेहनत करनी है. और जो दूसरी आयत में हमें ये समझाया जा रहा है कि एक ऐसा मकाम आएगा जब हम वाकई में मेहनत करेंगे तो शैतान हमारे हाथ पर भी मुसलमान हो जाएगा. यानी कि पैगंबर जो हमारे लिए फुटस्टेप्स छोड़ के गए वो हमारे लिए चलने के लिए,
कुरान के अंदर ये आयतें हैं और जो आज तावील हम समझ रहे हैं वो इसी बात को समझाने के लिए कि हम डरे नहीं और हम मेहनत करें, और एक वक्त ऐसा आएगा जब हम अपने शैतान पर काबू पा लेंगे। लेकिन इसके लिए हमको कंसिस्टेंट मेहनत चाहिए। आसान तरीका क्या है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए? मैं एग्जांपल देती हूँ, हमें दुनिया की मिसाल लें। अगर आप सोचें कि अगर कोई भाई बहन लेट से पाकिस्तान से या इंडिया से अमेरिका आता है, गाड़ी चलाना नहीं आती है, लैंग्वेज भी शायद डिफिकल्टी है, और कल्चर भी समझ में नहीं आता है, ड्राइविंग सीखनी पड़ेगी, लॉज को समझना पड़ेगा, नई लॉज समझेंगे तो प्रॉब्लम है, ड्राइव नहीं कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट भी बनना पड़ेगा। इतनी चीजें सीखनी पड़ती है, इतनी चीजें सीखनी पड़ती है टू सर्वाइव इन द सिस्टम। लेकिन हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। कभी भी जॉब पे, अगर जॉब की मिसाल लें तो जॉब पे हम कभी भी लेट नहीं होंगे क्योंकि क्लॉक इन करना पड़ता है। जब हम इतनी मेहनत करते हैं ना, तब हम एम्प्लॉय, मिसाल के तौर पे जैसे अगर कोई नया जाता है तो प्रोबेशन पे होता है, लेकिन फिर हमको हमारी एम्प्लॉयमेंट जो है वो कंफर्म हो जाती है, हमें बेनिफिट्स मिलते हैं। ये दुनिया की मिसाल। अगर हम इस मिसाल को लेके हम रूहानियत के अंदर लें तो हमें भी ये समझना होगा कि एक प्रोबेशनरी पीरियड होता है जिसमें हमें बहुत कुछ सीखना है, सारे इम्तिहान को पास करना है। इसके बाद हम उस काबिल बनते हैं कि जॉब कंफर्म है आपकी और आपको बेनिफिट्स भी मिलेंगे। लेकिन अगर आपने इस प्रोबेशनरी पीरियड जो प्रॉब्ली 90 डेज होता है उसमें अगर आपने परफॉर्म नहीं किया, या आप लेट आए, या आपने जॉब को मिस किया, आपको जॉब ही नहीं मिलेगी। तो हम किस तरह से उन तमाम जो रूल्स होते हैं, जो कानून होते हैं, उसको फॉलो करते हैं? क्या हम यही चीज करते हैं जब हम अपनी रूहानियत के लिए बात करते हैं? हम गैप करते हैं? तो आई होप कि ये बात हम समझ रहे हैं कि हमारा, हम जो डेस्टिनेशन पे हमने निगाह रखी, अजम्पिया जाप चाहिए, लेकिन इसके लिए जो टाइम पीरियड या जो रियाजत, जो मेहनत चाहिए वो नहीं करनी है। तो ऑफ कोर्स जब हम वो नहीं करते हैं या कचास यानी कि कच्चे तरीके से करते हैं, किया, गैप कर दिया, फिर दोबारा किया, फिर गैप कर दिया, फिर किया, तो क्या होता है कि वी नेवर कम आउट ऑफ दैट प्रोबेशनरी पीरियड, कि जहां हम कहें कि भाई एम्प्लॉयमेंट कंफर्म हो गया, अब तो आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे मिसाल से हम कहते हैं कि बेनिफिट्स, हम कहें कि चलो अजम्पिया जाब, तो अजम्पिया जाब होगा कहाँ से? कि हमारे अंदर कंसिस्टेंसी जो होनी चाहिए वो नहीं है। दुनिया के जॉब के क्लॉक इन करना या टाइम पे पहुंचना या रोड पे चलाने के लॉस को फाइल करना, फॉलो करना, हम इतनी मेहनत से करते हैं। वाय हम શું કામ આપણે કરીએ છીએ? કેમ કે કોઈ આપણને જોવે છે ને આપણે તરત દંડ મળે છે। અગર આપણે રોડ પર ફોલો નહીં કરશું ને પોલીસ જોઈ લેશે તો તરત ટિકિટ મળશે, ડર લાગે છે ને, તો આપણે બરાબર રૂલ્સ ને ફોલો કરશું। જોબ પર ટાઈમ પર નહીં જાશું તો આપણો બોસ આપણા ઉપર નારાજ થશે। આ બધા એક્ઝામ્પલ છે દુનિયાના ને, કે કોઈ સામેથી આપણે કમ્પ્લેન કરે છે, આપણે સજા મળે છે। પણ ઇમામ આટલો દયાળુ છે, એ કોઈ કમ્પ્લેન નથી કરતો। ક્યારે આપણે કેમ નથી કહેતો, જ્યારે તમે રાજી, જ્યારે તમારી મરજી, એ આપણે ટ્રુલી એઝ અડલ્ટ ટ્રીટ કરે છે। કેમ કે ઇસ્મે આઝમની જે દોલત છે એ અડલ્ટને મળે છે। અડલ્ટ જે છે એ રિસ્પોન્સિબિલિટીને સમજે છે। તો પછી જ્યારે આપણે એઝ અડલ્ટ આપણે થઈ ગયા અને આપણે એવું બિહેવ ન કરીએ અને આપણે કહીએ કે કેમ મને નૂર નથી દેખાતું, અજંપિયા જાપ કેમ નથી થતું, મને શૈતાન કેમ વસવસા આપે છે, તો હું એ જે દુનિયાની મિસાલ આપી, અગર તમે રિફ્લેક્ટ કરશો તો આપણા પાસે જવાબ બહુ ખુલ્લું, બહુ સરખાઈ રીતે આપણા સામે છે, અને આપણે શર્મિંદા થશું, બહુ નદામત થશે આપણે, કેમ કે દુનિયામાં તો આપણે બરાબર સરખાઈથી ચાલીએ છીએ, પણ જ્યારે દીનની વાત આવે છે તો આપણે એમાં આંખ આડા કાન કરી નાખીએ છીએ। તો મને ઉમ્મીદ છે કે આ ચીજ સમજમાં આવી ગઈ હશે। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास एक दूसरा सवाल है साथी का। मीना साहिबा आस्किंग, हाउ डू वी नो वी हैव रीच्ड द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ जिक्र in order to ask for shelter from the devil? સુભાનઅલ્લાહ, બ્યુટીફુલ બ્યુટીફુલ ક્વેશ્ચન। જો આ ક્વેશ્ચન છે, હકીકતના અંદર હું નાચીશ, હું ક્યાં જાણું, હું નથી જાણતી। અલ્લામા સાહેબને આ સવાલ પૂછવામાં આવ્યું હતું અને અલ્લામા સાહેબ કહે છે કે જે મેજિક નંબર છે એ કોઈને ખબર નથી, કેમ કે હર ઇસ્મે આઝમ, હર ખુદાના જે નામ કે વઝીફા કે કોઈ બી તમે કહો, એનો જે મેજિક નંબર છે ને આપણે ખબર નથી। પણ જ્યારે આપણે એ મેજિક નંબરને પૂગી જઈએ છીએ, મતલબ એ ઝિકરને, ઇસ્મે આઝમને કમ્પ્લીટ કરી લઈએ છીએ, તો તરત જ આપણે આપણા બાતિનના અંદર આપણે જોઈ શકશું। એની મિસાલ ને
કે તમે જોબ ઉપર પ્રોબેશનરી પીરિયડ તમે કમ્પ્લીટ કરો અને હવે તમારી એમ્પ્લોયમેન્ટ કન્ફર્મ થઈ ગઈ છે તો તમે બેનિફિટ્સ મળી રહ્યા છે. ઇમિડિયેટલી યુ વિલ ફીલ ધ બેનિફિટ્સ ઇન યોર હાર્ટ. કોઈને કહેવું નહીં પડશે તમને કે તમે ઇસ્મ આઝમ કમ્પ્લીટ કરી લીધું છે. યુ વિલ નો, દેર વિલ બી નો ડાઉટ. બેઝુલ ફરમાનમાં જે ઇમામ કહે છે કે દેર બી નો ડાઉટ. આપણા પાસે કોઈ ડાઉટ નહીં હશે. અને અલ્લામા સાહેબે બુક ઓફ હિલિંગના અંદર જ્યાં સમજાવેલું છે કે આ જે નંબર છે ને, મેજિક નંબર, એ ડિફર કરે છે બધાના માટે. બધાના માટે એક નંબર નથી હોતું, પણ આ મોટો નંબર છે, નાનો નંબર નથી હોતો કે કોઈને 2, 10 એમ નથી નંબર હોય છે. આપણા પૈગંબર પણ ઇબાદત કરતા હતા, પૈગંબર બનીને બાદ પણ ઇબાદત કરતા હતા. તો આપણે વિચાર કરવાનો છે કે આ ચીજના અંદર આપણે કન્સિસ્ટન્સી ને મહેનત ને રિયાઝત ઇબાદત જોઈએ છીએ. તો અલામા સાહેબ કહે છે કે જી મોમિનીન બહુ હિંમત કરીને કન્સિસ્ટન્ટલી આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે આપણે બાકાયદગી હોય અને ગિરિયાઓ જારીના સાથે. તો જે નંબર છે ને, જે બહુ મોટી ક્વોન્ટિટી છે, એ ઓછું થતું જાય છે. તો એટલે જ આપણે એટલી ગિરિયાવઝારી પર અહેમિયત દઈએ છીએ. અને ગિરિયાવઝારી કોઈ આસાન નથી કરવું, કેમ કે ઓટોમેટિક નથી થતી ગિરિયાવઝારી. આપણે દિવસના અંદર જ્યારે દિલને નરમ કરીને યાદીમાં રહીએ અને આપણે બરાબર પોતાની નફ્સને ખૂબ મારીએ તો આસાની થાય છે કે આપણે zikr કરતા વખતે આપણે ગિરિયાવઝારીમાં જઈએ. તો અલામા સાહેબ કહે છે કે આ આસાન કરી શકાય છે, લાઈક ક્વોન્ટિટી એને ઓછી કરી શકાય છે, પણ આ જવાબ જે છે કે એ જે નંબર છે એ આપણે નથી જાણતા, પણ એની અગર આપણે કમ્પ્લીટ કરી લેશું તો એનું ઇનામ જે છે, એનું બેનિફિટ જે છે, એ તરત જ વગર કોઈ ડાઉટે આપણે આપણા બાતિનના અંદર જોઈ લેશું, વગર કોઈ ડાઉટ. એમાં કોઈ શક જ નથી. જેવી રીતે ઇમામે બેતુલ ખ્યાલ ફરમાનમાં કીધેલું છે, રિમેમ્બર ધેટ ફરમાન, ધેટ ઇઝ ધી આન્સર. Alhamdulillah. Yasin Shamji Sahaba says so many important concepts to go forward in recognition of Imam. Subhanallah. Thank you for saying in Gujarati too. Thank you. નિયામત સાહેબા, જી શિખર મોલાનો આજે એટલું ફાઇન રીતે તમે સમજાવ્યા બધા કોન્સેપ્ટ કે આ અજંપિયા જામ્પમાં પાસે પહોંચવાનું એની તરીકા બધી શું છે. ડેફિનેટલી મહેનત તો બટ ઇટ્સ વર્થ ધીસ મહેનત ટુ Yes. રેકોગ્નિશન ઓફ એટલું સિમ્પ્લિફાઈ કર્યા તમે શિખર મોલા. એન્ડ થેન્ક યુ તમે ગુજરાતીમાં બી સમજાવ્યા. અને ફરમાનમાં થોડા દિવસ પહેલા જ તમે એ બીજું બી બોલ્યા કે સુલતાન મોહમ્મદ શાહ કહે છે કે તમારા જો તમે સારા કામ કરશો તો તમારા સારા કામ કરવાથી દિલના ખ્યાલ તમને ઊંચે લઈ જશે. સુબહાનલ્લાહ. હા, સુબહાનલ્લાહ, સુબહાનલ્લાહ. થેન્ક યુ, થેન્ક યુ. આ તમારી દુઆ છે કે એક સેટિંગ બની રહી છે કે ઉર્દુ અને ગુજરાતીમાં કોશિશ આપણે એમ જ કરશું હવે, થોડું ઉર્દુ થોડું ગુજરાતી, તો બધાને ફાયદો થાય. તમારી દુઆથી જ આપણું કામ ચાલી રહ્યું છે, મારી નથી એબિલિટી. શિખર મોલા. Alhamdulillah. हमारे पास यहाँ पे 2 सवाल हैं. Karima Sahaba is asking, seems we would need protection from shaitan before reaching a jumpia jump due to waswasa, etc., not after reaching a jumpia jump. So how can we understand this and why would we need protection after? If you Explain can in English. English, Okay. please. There are levels which we need to understand. There are levels. When a child wants, Dr. Saab was giving this example, right, in the Sunday lecture. When a child wants a candy, parents will say, why don't you do this, you do this, and then I will reward you. Right? We understand that concept. We are those children, and we have to do number A, number 2, number 3, whatever the conditions are, we have to meet those conditions in order to reach to the destination to be able to get that candy. So realize that in the beginning, it is dependent, it is incumbent upon us to do the work. Tell me, if anybody is telling you to be in this class, you came with your free will. You could have watched TV, you could have be with friends, you could do anything, right? But you came with your free will. This is what we are talking about. That with free will, we do with sincerity the ibadat. In the beginning, there will be waswasas, but we will have to fight it and stay consistent. In the beginning, if we are given the protection, then we will never learn to work hard.
we are rewarded for our hard work. So we have to be consistent and doing the ibadat. And yes, waswasa will be there and we will strive hard the way we have talked about it, that okay, we go out of the track, we come back, we do toba and we come back on the track to again do the zikr, and we continue to do that. And with practice, what happens that the time we get out of the way, falling down, it decreases. In the beginning, it may be whole hour past, but it will eventually become less and less and less, and we will stay connected to the zikr. And there are so many conditions which will help us to stay connected. But here, when we are talking about protection from shaitan, you need to understand protection meaning what? In other words, we are also talking about a higher level where shaitan has no power over you. The Ism-e-Azam has become a Jampi Ajam. Shaitan has converted that energy, that ability, that it has died down. It doesn't exist anymore because he has accepted Islam. So we are talking about different levels. But the key point I wanted us to understand that even within the waswasa, Allama Sahib talks about it in the books, that all in the beginning, these waswasa, actually we create ourselves due to lack of knowledge. We create drama in our lives, overthinking and whatnot, right? And it bothers us. It is our own doing because we are not mindful how to think and how to live our life, and all what we create, rethinking and repeating and whatnot, leads us to that becomes the obstruction in the progress. But in the beginning, we have to learn. There is no way out without learning, that I have to learn to do this. I have to fight this demon. I have to do this and I have to cut out. I have to have the actions to kill my carnal soul, meaning that she's wearing this, I want to wear this. Or got this new car, I want this car too. If somebody has money, they can do that. But if they are in knowledge, they will say, no, it doesn't matter. This car takes me to point A, point B. I will use my money for some good purpose. I don't want to show off or compete in her having car and me having car. And this is a simple example. There is the groundwork which is needed by Mu'min. And after that comes the reward. If we don't do the work, you're saying, that we need the protection in the beginning. Yes, we do. But where is where is that me who is desiring and saying, Mola, I love you. Show me your love with actions. So we need to do the hard work. And when you're talking about this, Ajampya Jab is a stage where carnal soul is no more. Because remember, there are so many conditions which we continue to forget. So given all the conditions are kept and met, the Ism-e-Azam becomes, Ajampya Jab, automatic. And then Shaitan has no ability to distract that Momin Arif, because it is higher rank we are talking about. Alhamdulillah, हमारे पास दूसरा सवाल है. Yalim, a very nice point was explained that how the Quran was already revealed in the batin of Prophet Muhammad, whereas its revelation was revealed later for the Ummah to follow in the Zahiri world. However, for a long time, I could not fully get clarity as how the process of revelation or wahi was of the verses of Prophet Muhammad ﷺ in Zahiri manner was being noted and written simultaneously by the Ashab Kiram. Kindly explain the process of revelation of the verses of the Prophet and how these verses were being noted down by Ashab simultaneously while the Prophet would sit around them, just want to visualize those joyful events of the miracles. So I would highly recommend you to read this book, Dua Essence of Ibadat. In that book, Allama Sahib mentions, Allama Sahib फरमाते हैं कि जब पैगंबर अपनी इबादत में, अपनी रूहानी तरक्की में अजीब व गरीब वाक़यात को, माजिज़ात को देखते थे, और वो एक अजीब रूहानी आलम के अंदर रहते थे, हर वक्त एक मुशाहिदा और एक अजीब व गरीब उनके अंदर एक मस्ती छाई रहती थी, यहाँ तक कि
खुदा ताला ने जिब्राइल को भेजा कि उनके पास वही लेकर नाजिल हुए, और फिर उन्होंने जो है वो अपनी रूहानियत की इब्तदाई मंजिल को पूरा किया, और जो उनको खजाना मिला था इल्म का वो ज़ाया ना हो जाए, क्योंकि इतना ज़्यादा खजाना मिला था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो, खुदा ने उनको ये जिम्मा दिया था, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि वो खजाना जो है वो अपने उम्मा के साथ शेयर करना है। इसीलिए पैगंबर ने जो है वो उसको बोलना पढ़ना शुरू किया ताकि वो लिखा जाए। अब जो ये वाली बात है कि भाई नाजिल हो रहा था और वो बोल रहे थे, रिमेंबर ये बात हमको समझ में आती है अगर हम अल्लामा साहब की किताबों को पढ़ते हैं गौर से, फिक्र से, तो क़यामत में दर्जात हैं बेशक, लेकिन जो आयत नाजिल होती थी वो अकॉर्डिंग टू जो इवेंट हो रहा होता था उसी के हिसाब से, जो ज़रूरत होती थी उसी हिसाब से नाजिल होती थी। खजाना उनके पास था, खजाना उनके पास था, लेकिन वो जब कहा जाता था तो वो ऐसा कि वही थी। कलम इलाही ने तमाम चीजें उनके दिल पे लिख दी थी, लेकिन जब उसकी जरूरत होती थी तब वो इल्म बाहर आता था, उसके पहले नहीं आता था। लेकिन वो तमाम चीजें वक्त के साथ साथ जो है वो लिखी गई। अगर आप गौर करें तो हम देखते हैं कि जो हम तीसरे पार्ट की दुआ में पढ़ते हैं, जो या अय्युह रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, जो पूरी आयत है, सुन्नी स्कॉलर सितोती जो है अपनी किताब में लिखता है, जिसमें ये कहा गया कि भाई खुदा की तरफ से ये वही नाजिल हुई कि भाई आप खुदा की तरफ से जो है पैगाम आपको जो नाजिल हुआ है वो आप बता दें। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपने अपनी पूरी नबूवत में कोई काम नहीं किया। और वो क्या पैगाम था? मौला अली की इमामत। और हमारे पैगंबर डर रहे थे क्योंकि उन्हें ये मालूम था कि अभी तक ये लोग जो हैं वो तैयार नहीं है कि मौला अली की इमामत को एक्सेप्ट कर सकें। एक मिसाल समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो खुदा ने फरमाया कि आप नहीं डरें, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तो ऐसी बात कितनी अजीब व गरीब बात लगती है। सबसे पहली बात तो कि हमारे पैगंबर को क्या डर लग रहा था? क्या ये बात मुमकिन है? ये तमाम बातें ये जो हैं कुरान के अंदर, ये इसलिए हैं कि हम इस बात को समझ सकें। क्या मौला अली की इमामत गदीर खून के वक्त डिसाइड हुई थी? क्या उस वक्त ही बताया गया था पैगंबर को मौला अली इमाम बनेंगे और कोई और नहीं इमाम बनेगा? मौला अली की इमामत तो पहले दिन से पैगंबर के दिल में थी, और कितनी सारी हदीसें मौला अली के बारे में हैं। लेकिन जिस वक्त पैगाम देने का वक्त था तो ऐसा लगता है कि भाई गदीर खुम के वक्त जो है वो वही नाजिल हुई और कहा गया कि आप ये इमामत को अनाउंस कर दें। तो रिमेंबर कि हम एज इंसान जब दुनिया में हैं, जब हमारा वक्त आता है, जो चीज हमें मिलनी होती है उसकी मर्जी है, तब हमें वो चीज दी जाती है। मौला अली तो इमाम थे उस वक्त से। दावत उशीरा में जब वो सिर्फ 8 साल की उम्र में थे और 40 आदमियों को जमा किया था पैगंबर ने अपनी फैमिली में से कि है कोई जो मेरा वसी बने। किसी ने हिम्मत नहीं की, किसी ने भी नहीं। मौला अली 8 साल के बच्चे हाथ उठाया कि या पैगंबर मैं आपकी मदद करूंगा, और वो दिन था कि वो उनके वसी बन गए। तो इमामत का अनाउंसमेंट हमको गदीर खुम में नहीं मिलता है, हमको तो उस वक्त मिलता है जब पैगंबर ने अपनी फैमिली को बताया कि मैं खुदा की तरफ से चोजन पैगंबर हूं और मेरा वसी मौला अली है। तो क्या वही उस वक्त नाजिल हुई थी कि इस वक्त नाजिल हुई थी? तो ये तमाम चीजें जो हैं वो रिफ्लेक्शन के लिए हैं आपके लिए कि आप सोचें, और अल्लामा साहब की किताबों को इस तरह से पढ़ें कि पी जाएं। एक दफा, दो दफा, तीन दफा में बात नहीं जमेगी, बहुत दफा पढ़ेंगे तब ये बातें समझ आएगी कि क्या बात हो रही है। तो उम्मीद है कि इससे आपको कुछ सोचने के लिए मवाद मिला और इस पे आप खूब गौर करेंगे, क्योंकि ये बातें कैसे समझाएं, सारी समझने की जरूरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे पास एक और सवाल है यहाँ पर। थैंक यू नियामत साहबा फॉर सच ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन. You have mentioned no one can reach high without Isme Azam. Can you please share your knowledge? How about people in other religions who claim that they have reached to Nur?
how come they reach there without isme azam? बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बात तो यकीनी है कि कोई भी इसमें आज़म के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। आप यकीन नहीं करें जो लोग कहते हैं कि उन्होंने तरक्की की है, क्योंकि वो तरक्की ही मुमकिन ही नहीं है इसमें आज़म के बगैर। तरक्की मुमकिन ही नहीं है इसमें आज़म के बगैर। लेकिन ये भी हकीकत है कि हम दूसरे मज़ाहिब में देखते हैं कि लोगों ने जो है वो तरक्की की है। लोग क्लेम करते हैं कि उन्होंने तरक्की की है। उनको देखने से ऐसा महसूस होता है कि वो भाई जो है वो दुनिया से हट के लोग हैं। स्पेशली द एग्जांपल मैं पर्सनली सोचती हूँ वो तिब्बत के लोगों की जो मॉन्क्स होते हैं, जो अगर आप उनको देखें तो वो अपने टेम्पल के अंदर वो रटन करते हैं, चैंटिंग, एक ही लफ्ज को लेके वो रटन करते हैं और वो शदीद प्रैक्टिस से जाते हैं कि अपनी कार्नल सोल को मारने के लिए कपड़े एक ही रंग के कपड़े पहनते हैं, खाना लिमिटेड खाते हैं, नेचर की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो वो जो है दुनिया की ख्वाहिशात से जब अपने आप को दूर करते हैं और एक ही लफ्ज पे गौर करते हैं और अपने आप को ह्यूमिलिटी में रखते हैं, तो वो पहले आसमान तक पहुंच जाते हैं। और ये कुरान के अंदर मेंशन है चैप्टर 61 में कि पहले आसमान पर चिरागा किया जाता है कि वो पहले आसमान पर पहुंच जाते हैं। तो रिमेंबर कि अगर हम आसमान की बात कहते हैं तो भाई 7 आसमान है खुदा के, यानी कि पैगंबर जब अपनी महराज में गए तो वो 7वें दर्जे पर पहुंचे जहाँ जहाँ उन्होंने खुदा का दीदार किया, राइट, महराज पे पहुंचे। जो शख्स जिसके पास इसमें आज़म नहीं है वो तमाम जब तरक्की करते हैं और उनकी मेहनत होती है तो वो पहले आसमान ही तक पहुंचते हैं, इसके आगे नहीं जा सकते हैं। एक स्माइली मोमिन जो है वो पहले से दूसरे आसमान से तीसरे आसमान पहुंच सकता है। क्यों? कि उसके पास इसमें आज़म है। ને આમાં સાહેબા જો મને યાદ હોય તો સુલતાન મોહમ્મદ ફરમાનમાં કીધા કે ઇસ્મે આઝમ વગર અવર કોમ લોકો છે એ લોકો 7મા આસમાન સુધી જ પહોંચે છે, ત્યારે ઇસ્માઇલી 10મો આસમાન સુધી પહોંચે છે. તો સમજા મોલા મિસાલ આપી કે એ લોકો શરૂના જે સ્ટેજમાં હોય છે અને ઇસ્માઇલી છેલ્લા સ્ટેજ સુધી પૂગે છે। તો વાત એક જ છે, મિસાલ અલગ અલગ શબ્દોમાં મોલા સમજાવે છે, પણ કુરાનના અંદર જે આયત છે એમાં કીધું કે પહેલા એ લોકો પહેલા આસમાન સુધી પૂગે છે અને નૂર એ લોકોને દેખાડવામાં આવે છે, પણ હકીકતના અંદર એના બાદ એ લોકોને રોકાઈ દેવામાં આવે છે। એ લોકો એનાથી આગળ નથી વધી શકતા, ત્યાં જ રોકાઈ જાય છે। પણ ઇસ્માઇલી મોમિન છે એ આગળ વધી શકે છે। તો આ બહુ ક્લિયરલી કુરાનના અંદર સમજાવવામાં આવેલું છે અને આપણું ઈમાન હોવું જોઈએ કે વગર ઇમામે આ દુનિયા ચાલી નથી सकती અને એના નામના વગર કોઈ આગળ વધી નથી सकતું। आई एम नॉट श्योर किसने लिखा है, लेकिन एजी अजम्पिया जा भाई जिस घट बिठा बेठर जी सोही घट होशे उजास। भीतर है जी। भीतर जी जिसके दिल के अंदर अजम्पिया जाप ऑटोमेटिक जिक्र खुदकार जिक्र हो गया है, वही दिल के अंदर नूर होगा, वही दिल के अंदर उजाला होगा। फिर वो एजी करीमा साहिबा ने पूछा ना कि लाइक कैसा, तो एजी घट उजाशे पाप थी नाशे जी सामी ने जपू सांस उसास। तो लाइक शी वाज आस्किंग, तो एक बार वो हुआ तो फिर जैसा कि आपने समझा है कि उसके बाद पाप होते ही नहीं, तो गिनान में प्रूफ है कि पाप थी नाशो जी। सुभान अल्लाह के गिनान में प्रूफ है कि जब इस आयत को जो हम बात जो समझाने की कोशिश करें वो गिनान के अंदर मौजूद है कि एक दफ़ा जब अजम्पिया जाप हो जाता है ना, इसके बाद पाप गुनाह या शैतान उसको बॉदर नहीं कर सकते हैं। इसके पहले जो है वो हमको बॉदर होता है। तो प्रोटेक्शन जो उसकी आती है, जो समझ हमको समझाई जा रही है, वो बाद में ऐसे आती है कि वो हमको तंग ही नहीं कर सकता है, वो हमारा गुलाम हो जाता है, हमारा नौकर हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे दो सवाल जो साथ में नाचीज मिला के पढ़ती है, क्योंकि आई थिंक आपने थोड़ा बहुत ऑलरेडी इसके ऊपर समझा दिया है। अगर कुछ और आप कहना चाहें तो कि what after the first heaven just they just stuck there, and the other one is Imam is Imamun Nas, so may he give Isme Azam in Batin to them. वो जो इमाम चाहे हर चीज मुमकिन है, लेकिन हम जानते हैं अगर हम देखते हैं हिस्ट्री के अंदर जाके, सलमान फारसी वॉज अ मोमिन
राइट, वो पहले ज़ोरास्ट्रियन था, फिर क्रिश्चियन बना और आखिरकार पैगंबर को ढूंढा, इसमें आज़म लिया इमाम से, एंड वी सी कि इमाम पैगंबर ने फरमाया कि वो अहले बैत। दूसरी पर्सनालिटी हम देखते हैं पीर नासिर खुसरो, जो सुन्नी मुस्लिम थे, लेकिन वो इस्माइली बने, इसमें आज़म लिया और फिर पीर के दर्जे पर पहुंचे। तो मौला देना चाहे तो क्या नहीं दे सकता है, कोई शक नहीं है, लेकिन ये कि उनको इमाम को दुनिया में ढूंढना पड़ेगा, इमाम को दुनिया में ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में आने का मकसद ही यही है हमारा कि इमाम को ढूंढे और इमाम को पहचाने। फिर इमाम बातिन में क्या देता है क्या नहीं देता है ये तो उसी की मर्जी है, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम इमाम को ढूंढे। तो जो ढूंढता है वो पाता है, जो लोग नहीं ढूंढते हैं, यानी कि जिनकी हम बात करें कि पहले आसमान पे वो अटक जाते हैं, वो डेफिनेटली वो अटक जाते हैं, वो उससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और मेजोरिटी ऑफ द टाइम लोग जो है वो जैसे मौलाना ने फरमाया ना फरमान में भी कि ये लोग को जादूगरू जादू करे छे, यू नो, कि दे यूज द रूहानियत टू डू वॉट एवर, राइट, उनकी जो भी रूहानियत के वो लोग इस्तेमाल करते हैं। रिमेंबर कि रूहानी तरक्की जो है वो दुनिया के अंदर इस्तेमाल करने के लिए नहीं होती, रूहानी तरक्की जो है वो रूहानियत के अंदर आगे बढ़ने के लिए होती है। इसलिए इमाम ने हमको जो है इस तरह से तालीम दी, हमारे पीरों ने हमारे गिरानों में ऐसी तालीम दी कि जब हम तरक्की करते हैं तो हमें खामोश रहना होता है और चुपचाप जो है वो और आगे तरक्की करना है, ना कि अपनी तरक्की को लोगों को बताना और उसकी वजह से उस रूहानियत को इस्तेमाल करके माजिज़ात करना या जादू करना, जैसे मिसाल मौलाना ही समझाई अपने फरमान में कि करना शुरू कर दें। तो ये बात तो नहीं है। तो मकसद ये है कि इस्माइली जो है इस बात को जानता है कि मौला हमें चाहते हैं कि हम तरक्की करें बातिन के अंदर आगे से आगे और इमाम के साथ एक हो जाएं, लेकिन बराबर वाले को पता भी ना चले कि आपकी हकीकत क्या है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये फॉलो अप क्वेश्चन को लेते हैं हम, और यहाँ पे इस आखिरी सवाल के साथ कि thank you for very well explained. The Prophet shared the verses as per the time and the situation and occasion, but still need some clarity on how verses were written by ashab while the Prophet would share the verses. Oh, simply it is very simply, it is written in the books that Paigambar would say it, recite it, and people will write it. And from the beginning, if somebody was with him, it was Maula Ali. From the beginning, collect the first Katibin was Maula Ali. And then there were more and more companions who were, you know, who realized the importance. They accepted Islam and they started writing. So they started writing on leaves or whatever, leather or whatever. They started collecting like that. अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी साथियों ने जो है वो और गिनाने के रेफरेंसेस भी दिए हैं, तमाम साथी जो है वो उनको पढ़ें और इंशाल्लाह हम इनसे फ़ायदा हासिल करें। Alhamdulillah. Thank you, Niamat Sahaba, for a wonderful session. Thank you for sharing your time and sharing the knowledge with us. Alhamdulillah, a wonderful session with the book series. We are all enjoying it thoroughly. Inshallah, we'll continue this. And thank you, friends, for joining. Ya Ali Madad, Ya Ali Madad. 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 Ya Ali Madad, Taslim, Ya Ali Ya Ali Madad. Madad. Ya Ali Madad. Ya Ali Ya Madad. Ali Madad, thank you. Ya Ali Madad. Ya Ya Ali Ali Madad. Madad. Ya Ali Madad. Ya Ali Madad. Ya Ali Madad. Ya Ali Madad, auntie, Ya Ali Madad. Ya Ali Madad. Ya Ali Madad.